लाइव है क्या? हो गया लाइव? So, good evening everyone. Economic Survey of India and budget. Actually, earlier I was planning that I'll keep doing science in between. But abhi, whatever extra class we'll get on Tuesday, Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, we'll keep doing Economic Survey of India and budget only. Basically, a lot of our students are also giving interviews, and they had requested कि सर सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया और बजट पूरा कर दीजिए so that they would be benefited. So we'll have 3 classes, Friday, Saturday, Sunday. Every day we'll discuss 2 chapters of economic survey of India. छोटी छोटी classes होंगी तब भी चलेगा. We'll discuss 2 chapters of economic survey of India on Friday, 2 on Saturday and 2 on Sunday. The 6th chapter of economic survey of India is pretty huge. There are 100 pages. So that class may go a bit longer. Be prepared for that. Other chapters are all small chapters that could be done in timely manner. Now, then we'll take classes on Tuesday and Wednesday. Tuesday and Wednesday I have been able to find a classroom jahan pe we'll take economic survey of India ka class, and then on Friday. So with this, our economic survey of India would be done. Along with economic survey of India, what I'm trying to do, like, see, what does economic survey of India has? Economic survey of India has what has happened in the country over the last 1 year, right? And then budget tells us what is going to happen in the coming year. So what I'm trying to do is, I'm trying to integrate both this data. So in your economic survey of India chapters, you would see that I have also included things from the budget. For example, when we'll talk about capital expenditure that has happened to promote economic growth in the country over the last 2-3 years, I have also briefly mentioned what Nirmala Sitharaman said on 1st of February about the budget expenditure in the coming year, right? So in this way, we'll keep doing things related to budget with economic survey of India, but in the end, we'll again go through the entire budget for the sake of completion. So here we'll keep doing it so that we remain connected, and their entire budget would be done again. Okay, so let me tell you the schedule for now. Okay, earlier I had told you, like, for current affairs batch students, I had told that I'll be doing science and technology का RTFQ, but इंटरव्यू वाले बच्चों का थोड़ा सा कंसर्न समझ लीजिए. They want to finish economic survey of India as soon as possible. So let's first finish ESI and budget, and then we'll do anything else. Okay. So let me tell you the schedule with which we will do economic survey of India. Today is what? 3rd of February. 3rd Feb. That is Friday. We'll do chapter 1 and 2. Saturday, we'll do chapter 3 and 4. Sunday, we'll do chapter 5 and 6. Okay, on Sunday, be prepared for a bit longer class, because the 6th chapter is very large and all its sections are very important. Like health दिया हुआ है, education दिया हुआ है, poverty दिया हुआ है, employment दिया हुआ है. All those things are very crucial for your mains examination, right? So यहाँ पे we are not doing it only for preliminary examination. All these topics I have arranged in such a manner that they become a model answer for your mains paper also, mains questions also. Okay, audio very low. अभी सही आ रहा है क्या? ये ठीक किया है क्या? ऑनलाइन बच्चे बोल रहे हैं ऑडियो कम है, उसे प्लीज देख लीजिए एक बार. तो this is something that we'll be doing on 4th Feb, on 5th Feb. Okay, then from 7th Feb, on 7th and 8th Feb, we will do 4 more chapters, 2 chapters each on 7th Feb and 2 chapter on 8th of Feb. उस दिन मुझे extra classes मिल पाई हैं, तो I'll be able to do, and then again हमारा Friday से normal शुरू होगा. Friday को we'll try to finish the entire economic survey of India and extra class लेके budget भी कर देंगे अगर होगा. Okay, got it. तो अभी क्या schedule है ये समझ में आया सबको? Okay, so let's start with economic survey of India. So as we were saying, what is there in economic survey of India? Economic survey of India tells us what has happened on the front of economy in the country in last 1 year. Okay, so generally the first chapter is about the economic growth, what has happened to economic growth over the last 1 year. But this time
they have given 2 chapters on it. One is talking about the state of economy in 2022-23, that is the current financial year that is going on. We'll talk about that. And then they have given second chapter where they are talking about India's medium-term growth outlook. Over the last 5-10 years, what is the growth outlook for India? What are the conditions which would make it possible that which would make the next 5, 6 years, 7 years very important for India's growth and development? They have discussed this aspect. So briefly in दोनों chapters को हम discuss करेंगे. But while doing this, a lot of key terms would come. I had already asked you to go through the basics of those GDP, GNP. I hope you have already done it. Kal, before we start chapter 3 and chapter 4, we'll do some questions on Economic Survey of India, chapter 1 and 2. Objective questions which may be relevant for preliminary examination. तो थोड़ा सा ध्यान से उसे करके आएंगे. Fine. So let's start with the first chapter. Chapter 1, State of Economy 2022-23. Recovery is complete. So what they're trying to say is the last 2 years, or 2020, the year 2020 and then the year 2022 have been full of turbulence. Economic Survey of India is saying that in the past, when some economic problem occurred, it occurred in a distributed manner. Distributed manner in the sense World War I happened, then World War II happened. उसमें gap था थोड़ा 5-10 साल का recovery. Great Depression happened. There was gap for recovery. Similarly, then in 1970s we had the oil crisis. Up 1990s में आओगे when you look at the world economy, you will see the East Asia crisis in the late 1990s. Then dot-com boom, and then the burst in early 2000. Global financial crisis in 2008. Then some taper tantrum in 2013-14. Right. But the last few years, 1 or 2 years, have been such that a lot of problems have come together at one go. 2020 में COVID-19 lockdown throughout the world had negative impact. Lockdowns meaning demand was getting hampered, production got hampered, supply chain got affected. But 2021 kind of went well, in spite of 2021-22 kind of went well, in the sense that we were able to recover. Initially there was Delta variant which created problems, but because of our learning from the first COVID-19 shutdown, we decided that the shutdown would not be as strict, and all over the world it was decided that lockdowns would not be as strict and economy could continue. So 2021-22, the year 2021-22 saw a good recovery, both in our GDP growth as well as in our exports. Jobs situation improved. The credit which banks were giving were improving. All this happened. And 2020 was supposed to be the year जहाँ पे these things would further go up. 2022-23 was supposed to be the year where these things would further go up, improve situation, or all the efforts that we have put would take us in the right direction towards growth. But in the last 10 months, as per Economic Survey of India, a lot of problems have come together. They start with over the years, a lot of economic problems globally, not at the domestic level, globally had occurred in a distributed time period, not at one go. But in 2022, they say that 2022-23, this financial year, they say that a lot of problems occurred at one go. First, Russia-Ukraine war started. It started in financial year 2021-22 only. February 2022 में start हो गया. So that is financial year 2021-22 only. But its negative repercussions we started seeing in 2000. We saw it in 2022, March, April 2022 also, and we see that even today, commodity prices have been affected. Oil prices have been affected. एक टाइम ऑयल प्राइस अपने पीक पे चला गया था. It was primarily because of Ukraine-Russia war. Wheat production. Ukraine is a large producer of wheat. Wheat prices had increased drastically. Right. This had emerged as a major challenge. Commodity prices going up
food products prices going up, oil prices going up, it created huge issue. Now, and this had other problems also. Europe depends a lot on the fuel from Russia. When, because of sanctions and because of political differences, the supply of oil was affected in Europe, the inflation in Europe reached its highest level over the last few decades. अलग अलग कंट्री में दिस नंबर, किसी कंट्री में लास्ट 40 इयर्स में हाईएस्ट इन्फ्लेशन है, किसी कंट्री में लास्ट 30 इयर्स का हाईएस्ट इन्फ्लेशन है. द नंबर वाज डिफरेंट, बट what we also saw, high levels of inflation. Now this high level of inflation was not only because of oil prices going up after the, or fuel prices going up after the Russia-Ukraine war. This was also because of a lot of stimulus given at the time of COVID-19 crisis. During COVID-19 lockdown, the world was going through recessionary phase. जब recessionary phase आएगा तो governments would try to do what? Government would try to put in more money in the economy. They would try to put in more money in the economy. This is what they tried to do. But when they put in more money in the economy, what happens? Inflationary pressure occurs. So this was another reason. जैसे इंडिया में 2011, 12, 13 were very bad in terms for inflation, because in 8 when global financial crisis had occurred, government of India had put in a lot of fiscal stimulus in the economy. This happened, and because of that, high inflation all over the world, especially in advanced economies. This high inflation has continued even now, led to rise in interest rates. इंटरेस्ट रेट जो कोविड के टाइम यूएस में 0 पे चले गए थे, they started increasing it in 2022, and even till the recent meetings of the Fed there, they have kept on increasing. Same happened with respect to India, same happened with respect to countries in Europe. Interest rate rising, interest rate rise होगा अगर सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी रेट्स इंक्रीज करेंगी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, व्हाट वुड हैपन? लोन लेना महंगा होगा, लेस मनी वुड बी देयर इन द इकोनॉमी, राइट? when do we do that? We do that to control inflation. But if there is less money in the economy, economic growth suffers. This is something which has emerged as another global problem. पहला, इस पिछले एक साल में रशिया यूक्रेन वॉर है. इकोनॉमिक सर्विस ऑफ इंडिया स्टार्ट्स विद कि रशिया यूक्रेन वॉर emerged as a major issue. Then the monetary tightening all across the world became a major challenge. In economy, current affairs, only economic survey and budget are sufficient? No, not necessarily. We will cover economic survey of India and budget thoroughly. उसके बाद जो भी बचेगा इकोनॉमी का, करंट अफेयर्स पिछले एक साल का इंपॉर्टेंट या पुराना भी इंपॉर्टेंट, विल डू दैट ना. सिर्फ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया मे नॉट बी इनफ. अब ऐसा हो कि सिर्फ इससे ही सारे सवाल आ जाए, अच्छी बात है, बट वी विल बी फुली प्रिपेयर्ड ना. हम अच्छे से सारी चीजें प्रिपेयर करके रखेंगे, राइट? तो डिड वी अंडरस्टैंड दिस? पहला प्रॉब्लम. दूसरा प्रॉब्लम, देन स्लोइंग ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड. This has emerged as another major problem. In fact, in the second half of this financial year 2023, global trade has become, rate of growth in global trade has become negative. अब ग्लोबल ट्रेड नेगेटिव क्यों होगा? देखो, पहली बात, ग्लोबल ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट होता है? 2021 में इंडिया का डोमेस्टिक डिमांड इतना ज्यादा नहीं था, फिर भी इंडियन इकोनॉमी केप्ट ऑन डूइंग वेल. Why could it do well? It could do well because Indian exports were increasing, because globally there was reopening going on, which led to a lot of demands there. So despite of the fact that our domestic consumption had not picked up, आपको ये पता है, हम जीडीपी अगर एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो क्या बोलते हैं? राइट, दिस इज कंजम्पशन, गवर्नमेंट वाला कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ये डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है इंडिया के जीडीपी में. बट इन 2021 इसमें इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं था. इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बट नाउ व्हेन इन्फ्लेशन इज वेरी हाई, एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम भी है. दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन. इन दीज टाइम्स व्हाट
governments try to do, they try to go in the protectionist mode. वो चाहते हैं कि let us substitute imports, import ना करके अपनी कंट्री में ही चीजें बना पाए. They go to this mode which hampers exports, which hampers international trade. Will it impact, has it, this has Economic Survey of India says this has emerged as another challenge in last 1 year, which is hampering economic growth. Did you understand this? Then slowdown in China. Now you would say, sir, slowdown in China अच्छा तो है, बहुत परेशान करता है China, right? But China is one of the largest economies in the world. It is also one of the largest consumers. और वहां पे स्लो डाउन होता है ना, तो ग्लोबल इकोनॉमी गेट्स नेगेटिवली अफेक्टेड. नाउ स्लो डाउन इन चाइना was primarily because of its zero COVID policy. This was one of the major factors. Because they follow this zero COVID policy, they go for very strict lockdown. Eventually, they gave it up. After a lot of protest and after a lot of negative impact on the economy, they have given it up. And this factor may not be true in the coming year, in the 2023-24 year. But this also became a global factor which impacted global growth as well as India's growth. And finally, एक और चीज which the Economic Survey of India is highlighting is that during COVID-19, a lot of education and income earning loss had taken place. A lot of education loss. अब देखो, अगर इंडिया का ह्यूमन रिसोर्स या ग्लोबली भी ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं है, what would that lead to? Would that lead to, in long run, India's human resource quality getting slightly negatively affected? एक साल पढ़ाई अगर अच्छे से नहीं हो पाई है, overall productivity would get affected. Similarly, if income loss took place, there were people who were living above poverty line, they may have ended up going below poverty line, so their human capital formation abilities get affected, get negatively hampered. This would impact India in long run. तो ये बोल रहे हैं, Economic Survey of India says that loss in education and income earning opportunities due to COVID-19 lockdown brought medium term challenge. आगे आप कुछ सालों में जाओगे तो when this people whose education was affected, when they will start contributing in the economy, it would have some short term challenges, medium term challenges. So we are talking about what happened, what are the challenges which India faced in 2022-23 in terms of financial growth. तो external sectors में there were lots of issues. इतने सारे challenges Economic Survey of India says that generally एक साथ नहीं आते. They come in a distributed manner, and that's why they first list कि World War I, World War II, Great Depression, 1970s का oil crisis, 1990s का East Asian economic crisis, the ये .com burst that took place in early 2008 recession. All these problems do not occur at one go together, but here they've occurred together at one go. Fine. So what are the challenges in the Indian economy right now? Broadly अगर देखेंगे, in the past 1 year, Russia-Ukraine war, we have understood that. Inflation, India में भी inflation बढ़ा है, that's why we have seen that interest rate have been going up. RBI का interest rate भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है this financial year. In fact, we crept above, so we know in India we follow flexible inflation targeting. In flexible inflation targeting, what we want is RBI should keep inflation in the range of 4 plus minus 2%. So as the inflation goes beyond 6%, it goes beyond the limit which is acceptable. So our inflation went beyond the limit which is acceptable in January 2022. Though we could come back below this level in December 2022 in the latest data that we have, and it might happen that in future itna zyada increase na ho, situation may improve, but in 2022 this also was a major challenge. जैसे globally रशिया यूक्रेन वॉर एक चैलेंज था, हमारे लिए भी रशिया यूक्रेन वॉर, कमोडिटी प्राइसेस हमारे लिए भी बढ़े. देन rising global commodity prices, this we understand. This rising why was inflation occurring? One, because of rising global commodity prices, then because of extreme weather conditions. Recently क्या हुआ, heat and unseasonal rains
also impacted production of certain food items. And हम जब chapter 5 में आएंगे, chapter 5 is about inflation, there will exactly see कि in CPI the food that we eat play a very big role in overall inflation impact. And therefore जब tomatoes के price बढ़ जाते हैं तो our food inflation goes up, which made us go beyond 6% increase limit, impacting leading to RBI leading to RBI going for tight monetary policy, leading to increase in interest rates. Okay, so to control inflation some steps were taken. Tightening of monetary policy was one aspect, we all understand that, but at the same time we cut excise duty. अब जब हम यहाँ we की बात करें, देखो, when we talk about world we say we, so we say the entire humanity. When we talk about India we say we, तो हम इंडिया में हमने क्या स्टेप्स लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए, तो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन करी, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिड्यूस्ड एक्साइज ड्यूटीज ऑन फ्यूल्स, पेट्रोल पे, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी. हमें पता है एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑल अदर प्रोडक्ट्स हैव बीन रिमूव्ड बाय जीएसटी, बट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर स्टिल नॉट अंडर जीएसटी. तो उस पे एक्साइज अभी भी कौन लगाता है, सेंटर लगाता है. एक्साइज ड्यूटी वाज इंपोज्ड बाय सेंटर, प्लस एक और प्रोडक्ट है जिसपे एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं अभी भी हम, सेंटर, टोबैको. टोबैको इज अंडर जीएसटी, तो उस पे जीएसटी तो लगता ही है, बट दैट्स एन एक्सेप्शन, उस पे जीएसटी भी लगता है प्लस एक्साइज ड्यूटी भी लगता है. राइट, ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता कर लेंगे जब हम पढ़ेंगे इन चीजों को. तो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी वाज रिड्यूस्ड टू कंट्रोल inflation. Why? Because petrol and diesel become input in a lot of other sectors, and therefore if we control inflation of petrol, if we reduce prices of petrol and diesel, what would that lead to? Reduction in input prices in a lot of other sectors, and thus it contributes a lot in India's inflationary challenge. Okay, now we were talking about the problems at the domestic level that we are facing. A third problem that occurred was export wala. तो ये हमने आपको समझाया कि स्टैगफ्लेशन सिचुएशन में कंट्रीज बिकम प्रोटेक्टिव. In stagflation situation there is stagnation as well as inflation. They are not generating enough employment in their countries. So what happens in that situation? They would want कि भाई prevent imports, try to generate more jobs here by promoting businesses here. So it hampers export. So that was one thing that we had studied while studying the global aspect. Now inflation and tightening of monetary policy all across the world becomes another factor. When tightening of monetary policy is happening, paisa is not that easily available. Even that would impact importing abilities. Then as per UNCTAD, the global trade growth turned negative during second half of 2022. Note it carefully. 2022 का जो second half है उसमें global trade growth became negative. मतलब when compared to last year, in the second half this year, the trade was lesser. This was hampering India's economic growth in this period. Fine, but the Economic Survey of India says that there are lots of factors because of which we can say that situation in India is good and would become better in coming years. It says that despite all these challenges, despite all these problems, global inflation अपने highest level पे चला गया है, India is going to grow in the range of 6.5 to 7.3%. It's not only Economic Survey of India basically says that various IMF का report है, World Bank का report है, SBI, India के भी अलग अलग bodies का report है. They have given India's growth range, they have estimated India's growth in this range. This is the second highest in the world. Not second highest in the world, second highest among major economies in the world. India से ज्यादा किसका economic growth है among major economies? नहीं, चाइना कहाँ? चाइना तो कैसी कैसी बातें कर रहे हो? सऊदी अरेबिया, 2 दिन पहले न्यूज आया है, इंडिया टॉप पे इकोनॉमिक ग्रोथ में हाईएस्ट पे था, बट सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली क्या किया है, इंडिया को पिप कर दिया. सऊदी अरेबिया इज अ मेजर इकोनॉमी एंड उसका जो नॉन ऑयल वाला सेक्टर है ना, दे हैव स्टार्टेड डूइंग वेल देयर. तो दैट इज वन मेजर इकोनॉमी दैट इज डूइंग, मेजर इकोनॉमी मतलब बड़ी इकोनॉमी दैट इज डूइंग बेटर देन इंडिया.
The Economic Survey of India says that in spite of all these challenges, India is doing well as per various estimation. ये अपना estimation देगा आखिरी में, Economic Survey of India अपना estimation देंगे, but as per various estimation, second highest rate of growth is there in India among major economies of the world. So what are the reasons? इतने सारे challenges हैं, है ना? क्या क्या challenges हैं? रशिया यूक्रेन वॉर, उसका चैलेंज है, इन्फ्लेशन वाला चैलेंज है, एक्सपोर्ट इज गेटिंग हैम्पर्ड, इंटरनेशनल ट्रेड इज सफरिंग, वो सारे चैलेंजेस हैं. बट व्हाट हैज हैपेंड दैट इंडिया कैन स्टिल डूइंग वेल एंड इन फ्यूचर इट वुड डू बेटर. पहला है रिवाइवल इन डोमेस्टिक कंजम्पशन. देखो 2021 में डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना रिवाइव नहीं है. देखो डोमेस्टिक कंजम्पशन रिवाइव होने के लिए हमारी इनकम बढ़नी चाहिए, तब हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे. अभी आई डू नॉट राइट टू दैट फॉर्मूला अगेन, है ना, जीडीपी इज इक्वल टू डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट का फिर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल. आई डू नॉट नीड टू राइट दैट अगेन. नाउ एक्सपोर्ट इज गेटिंग हैम्पर्ड, बट 2021 और 2022 के फर्स्ट हाफ में विद द इंडस्ट्रीज विच डिड वेल, द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव्ड, ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी, all these things led to increased income for people in India. So despite the fact that in 2022-23 what is happening, exports are going down. हमने देखा export negative हो गया in second half of 2022. Exports are going down, fine. But जो consumption वाला side है ना, वहां पे we have ended up doing well. That is one reason. So that is one key growth driver in India's economic growth. Global recession है, global imports कम होंगे, कोई बात नहीं, इंडिया खुद इतना कंज्यूम करेगा that our economic growth would do well. Right? जब domestic consumption was not well, we focused on exports, but when exports are not doing well, when we focused on exports, what happened? इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, इंडिया में लोगों के पास इनकम बढ़ी, एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज्ड. सो डिपेंडेंसी ऑन एक्सपोर्ट वाज रिड्यूस्ड स्लाइटली. सो दिस इज द मेजर फैक्टर इन व्हाई इंडियाज इकोनॉमी में कीप ऑन डूइंग बेटर. आप देखिए प्राइवेट कंजम्पशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्टूड at 58.4% in Q2 of FY23. When we say FY23, we mean financial year 22-23. आप में से जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, डू नॉट. So it is financial year 2022-23, which is from 1st of April 2022 to 31st March 2023. And when we say Q2, second quarter, April, May, June, first quarter, July, August, September, second quarter. So private consumption as a percentage of GDP stood at 58.4% in Q2 FY23. तो हमारा जीडीपी में हमने देखा था C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस इम्पोर्ट, दिस वॉज आर जीडीपी. उसमें जो कंजम्पशन वाला एस्पेक्ट है दैट इज 58.4% इन Q2, इंडिकेटिंग हाउ बिग दिस कंट्रीब्यूशन इज. एंड व्हाई हैज दिस हैपेंड? दिस रिबाउंड हैज हैपेंड बिकॉज बहुत सारी चीजें देखिए, सपोर्टेड बाय रिबाउंड इन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज. इन 2020, इन 2021 देयर वर डेल्टा वेरिएंट, मेन वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट. तो जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज थी, जैसे मूवीज, वो एंटरटेनमेंट वाला, और टूरिज्म, है ना, वेर यू मीट न्यू पीपल, वेर यू गो टू न्यू प्लेसेस, ऑल दोज वर इन अ वे लॉक्ड. इनका रिबाउंड, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, इट हैज रजिस्टर्ड very good growth leading to increase in overall consumption. Further, near universal coverage of vaccination. What would this near universal coverage of vaccination do? It will give us more confidence that we can go out, we can go to the market. This has also played a very important role in ensuring that India keeps doing well. And then release of pent up demand. Now what is this release of pent up demand? And ये release of pent up demand तो सारे दुनिया में होना चाहिए. Why specifically India? Or why India has been able to do better? So do we understand what is release of pent up demand? हम 2020 में 21 में we did not go, हम सब घर में बंद रहे.
we did not visit some new place, we did not get married, है ना, फंक्शंस होने थे, फैमिली फंक्शंस हमने रोक के रखे, ये सारी चीजें हुई. नाउ व्हेन लॉकडाउन्स ended, when vaccination coverage increased, when safety kind of got enhanced, in that situation all those consumption demand which were blocked at that time would get a jump here. But ये तो फिर पूरी दुनिया में होना चाहिए. Why especially India? It's because India में जो consumption expenditure है, its contribution is very high. So when you suppress that consumption, recoil would be much higher. India में consumption demand is consumption is a very good, a very big part of India's expenditure, and therefore this recoil is much larger in case of India. हमें बात समझ में आ रही है ये? Okay. And this release of pent up demand was also reflected in housing sector. Housing sector, जैसे COVID-19 लॉकडाउन चल रहा है, क्या हम नए घर खरीद रहे थे? नहीं, है ना. Prices of housing sector was also going down. Prices of houses were going down. Inventories were increasing. But in 2022-23 we have seen prices going up. Inflation वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम बस ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं. We will go to inflation वाला चैप्टर, देयर विल स्टडी की हाउ प्राइसेस ऑफ होम हाउसेस हैव गॉन अप. देयर आर एनएचबी है, वो दो तरह के इंडेक्स पब्लिश करता है. तो इन बोथ दीज इंडेक्सेस दे शो दैट प्राइसेस आर गोइंग अप. इन्वेंटरीज हैव कम डाउन. इन्वेंटरीज कम होने का मतलब है जो घर बने हुए हैं और बिक नहीं रहे हैं, दोज आर इन्वेंटरीज, दे हैव कम डाउन. So all these factors indicate have played a role in India's improved economic performance. तो पहला था हमने रिबाउंड इन डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करी, उसके लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए. देन अनदर रीजन व्हाई वी आर डूइंग वेल इज आर कैपिटल बजट. आर कैपिटल बजट और कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज increased a lot in recent years. अभी शायद इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, I will show you the graph. In fact, even in this year's budget, one a big highlight is our government has decided to increase its capital expenditure by 33%. 10 lakh crore rupees have been allocated for capital expenditure. Capital expenditure has bigger multiplier effect, so its contribution in GDP is much higher. Revenue expenditure का ROI थोड़ा कम होता है. आप एक रुपए सैलरी में खर्च कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट ऑन GDP इज स्लाइटली लेसर देन 1. बट कैपिटल, जब आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, कैपिटल में स्पेंडिंग करते हो, उस कॉन्ट्रीब्यूशन इन GDP इज मच हायर. तो एक तो कंजम्पशन बढ़ा है, बट दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है. एंड दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर यहां पे, अच्छा, बिफोर we go why capital expenditure has been increased or how we were able to do that, and let's say other countries were not able to do that. हम बोल रहे हैं हमने बाकी सबसे अच्छा किया है, तो why others would not be able to do that, उसको समझने से पहले understand this. Going by the capex multiplier estimated for the country, the economic output of the country is set to increase by at least 4 times the amount of capital expenditure. तो जितना आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, उसका इंडिया में एस्टिमेट ये है कि उसका 4 टाइम्स आउटपुट में कंट्रीब्यूशन आता है. वेरस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लेस देन 1 टाइम. अगर आप 100 रुपए रेवेन्यू में स्पेंड कर रहे हो, मतलब कि सैलरीज देने में स्पेंड कर रहे हो, तो उसका कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज स्लाइटली लेस देन 100 रुपीज. बट अगर आप 100 रुपए स्पेंड कर रहे हो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, उसका कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी कैन बी अप टू 4 times. There are various estimations, we cannot exactly calculate, there are various estimation regarding this. Okay, so not only has budget 2022 and budget for financial year 2023 increased the allocation for capital expenditure, even at the state level capital expenditures have gone up, and there are central government have played a very important role here. Center is giving grant and aid for capital works, and center is also giving a 50-year loan for capital expenditure to state government, and this is interest free.
बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर ना सिर्फ सेंटर का बढ़ा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज ऑल्सो गॉन अप एट द स्टेट लेवल, एंड दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट ओनली इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर बट इज ऑल्सो क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। नाउ एक और चीज समझते हैं, देखो जब फिस्कल डेफिसिट when there is recessionary condition, what do? Governments try to spend more money, है ना? When governments spend more money, sometimes there may be crowding out of investment, private investment, because government उन पैसे को borrow करके spend कर रही है, वो सारे challenges आते हैं। But when this government spending is in capital expenditure, जब हम अच्छे रोड्स बना रहे हैं, अच्छे पोर्ट्स बना रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, एट दैट टाइम गवर्नमेंट स्पेंडिंग लीड टू क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। गवर्नमेंट अच्छे रोड बनाएगी, इंडस्ट्रीज ज्यादा सेटअप होंगी, गवर्नमेंट अच्छे पोर्ट्स बनाएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा एफिशिएंट होगा, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली leads to crowding in of private investment into an economic landscape broadened by vacation of non-strategic PSUs। तो और हम ये भी देखेंगे, ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया has come up with a new PSU policy where what they have decided is कि सिर्फ स्ट्रैटेजिक एरियाज में गवर्नमेंट रहेगा, नॉन स्ट्रैटेजिक एरिया में we will go towards privatization। तो in a situation where government is leaving a lot of these sectors, improving infrastructure, private players are coming in, private players are investing more, and this is visible in our tax collection, both our GST collection and अब गवर्नमेंट अपने आप से तो GST कलेक्ट नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर, यहां पे आप देखेंगे हमारा डायरेक्ट टैक्स का भी हाईएस्ट कलेक्शन वुड हैपन इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 सो फार, एंड इनडायरेक्ट टैक्स का भी, GST का भी highest collection would happen in financial year 22-23। For those of you who are part of current affairs program, हमने already पढ़ा है, ये प्री कम मेंस में जो है हमने सितंबर अक्टूबर में पढ़ा था कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ इंडिया जीएसटी ग्रोथ, जीएसटी कलेक्शन हैज बीन इंक्रीजिंग एंड इट हैज बीन अमंग द हाईएस्ट सो फार। ओके, तो दूसरा फैक्टर ये था। तो वी आर सेइंग कि व्हाई इंडिया हैज केप्ट ऑन डूइंग वेल। पहला फैक्टर था हमारा कंजम्पशन डिमांड बढ़ा है, दूसरा फैक्टर था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से ना केवल मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा है, बट व्हाट इज हैपनिंग, प्राइवेट सेक्टर का क्राउडिंग इन हुआ है, विच इज ऑल्सो लीडिंग टू इंप्रूव्ड सिचुएशन। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट ऑफ कॉर्पोरेट, एंड इसी के साथ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। नाउ व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट ऑफ कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट्स का स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट मींस कॉर्पोरेट की लायबिलिटीज कम है, उनके लोन्स कम है। इफ यू गो टू 2010, अभी ये डेटा भी हम आपको डिटेल में देंगे, 2010 में जो अपने नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के प्राइवेट लोन्स थे, तो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर के लोन्स वो होंगे, अच्छा इसे भी पहले थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो, लेट्स से दिस इज अ प्राइवेट एंटिटी, इट इज टेकिंग लोन for further giving loans, and it's a financial company, it's a bank, and if it's taking it, we're not talking about this would be financial loans, we are talking about non financial loans or non financial debt। तो non financial debt अगर ये फाइनेंशियल वाली कंपनी नहीं है तो ये क्या होगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होगी या सर्विस सेक्टर कंपनी होगी, कुछ होगी। ये लोन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी in 2010 was more than 100% of India's GDP. But this loan has come down in recent years. This loan has come down in recent years. अब लोन कम हो रहा है फिर से। Let's come back here. In the last decade, India's non-financial private sector debt and non-financial corporate debt as a share of GDP declined by nearly 30%. इनका debt, private sector का debt has reduced by around 30%. It had reached beyond 100% of India's GDP and has come down to around 80% of India's GDP. डेट कम हुआ तो डेट पे इंटरेस्ट पेमेंट इनका कम होगा, इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा,
है ना, ये अपना लोन्स टाइमली पे कर पाएंगे। तो द ईयर 2010 टू 2018-19 वाला जो फेज था ना, वो स्ट्रेसफुल, बिकॉज बैंक्स का भी एनपीए ज्यादा है, इनका भी बैलेंस शीट सफर कर रहा है, बिजनेसेस का, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव सो मच लोन, दे हैव टू पे सो मच इंटरेस्ट, दे कैन नॉट टेक फर्दर लोन्स. Banks have given so much loans and so much of the, a large part of that has become NPAs. Bank is also not willing to pay a lot of loan, but that has changed. Now both the balance sheet of the banks as well as balance sheet of the private sector, corporate sector has improved. This has limited the interest cost. Private sector को कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. It has saved overheads during COVID-19 pandemic. ऐसे समझो, अगर मैंने बहुत सारा बैंक से लोन ले रखा होता और कोविड-19 लॉकडाउन लग जाता, इंटरेस्ट तो मुझे अभी भी देना पड़ता. So that's why the Economic Survey of India is saying कि this lower numbers have saved overheads during COVID-19 pandemic and may have further contributed to strengthening of balance sheet. This has also led to increased profit in the corporate world. Better profitability led to they paying their debts more effectively, and therefore even corporates have more scope of taking loans and doing capital expenditure. आज नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर हम उसे बोलते हैं जो कंपनीज एक्ट के प्रॉपरली रजिस्टर हो जाता है. प्राइवेट सेक्टर पूरा रजिस्टर नहीं हो सकता है. राइट नाउ जो इंक्रीज रोबस्टनेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर, हमने देखा if you were reading newspapers in 2016-17 you would see इंडिया में बैंक्स का एनपीएस बहुत ज्यादा था. इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 16 या 17 वाले में उनका एक चैप्टर था डेडिकेटेड ऑन ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, है ना. वो बोल रहे थे बैंक्स ना तो लोन देना चाह रहे हैं क्योंकि उनका एनपीए बहुत हाई है, ना उधर से बहुत डिमांड है. राइट, ये सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी बिकॉज businesses would do well if they are able to access credit effectively, but this has improved. इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. We would see that NPAs have come down a lot. अब अदानी जी ने थोड़ी प्रॉब्लम कर दी है. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया हैड नॉट कंसिडर्ड दैट, बट उसका इंपैक्ट मे बी बाद में दिखेगा. अगर इंपैक्ट होगा, वी डू नॉट नो, क्या पता. मास्टरमाइंड ends up doing something which does not have negative impact at all. Okay, let's so coming back to increased robustness of banking sector. तो why banking sector has improved? हम समझे कैसे improve क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि NPAs have reduced, है ना. Their capital adequacy ratios have gone up, but how they were able to do that? There are many factors in it. One, गवर्नमेंट ने बहुत सारा कैपिटलाइजेशन किया. पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिनके एनपीएस बहुत ज्यादा थे, गवर्नमेंट इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी इनटू देम. दैट इज रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक. That became one factor, but there were other steps also. For example, insolvency and bankruptcy code that we brought in 2016. This insolvency and bankruptcy code, do we understand what insolvency and bankruptcy code is? सबको पता है ना. जिनको नहीं पता, we will study it soon, do not worry. Insolvency and bankruptcy code ऐसे समझो कि suppose let's say my business, it's losing money and I'm in a situation where I'm not able to return my liabilities, take care of my liabilities. In that case, I become insolvent. In this situation, fast resolution is important. अगर resolution fast नहीं होगा तो मेरे loans और बढ़ते ही जाए, loans पे interest बढ़ के वो problem बढ़ता ही जाएगा, and यहाँ पे जो resources मेरी कंपनी में stuck है वो stuck रह जाएंगे. तो fast resolution has been ensured by insolvency and bankruptcy code. Fast resolution होने की वजह से क्या होगा? Suppose let's say again मेरा business बंद हो रहा है, डूब रहा है, एंड मैंने बहुत सारा लोन ले रखा है. अगर रेजोल्यूशन फास्ट नहीं होगा तो द एसेट दैट आई मे हैव, द टीवी दैट आई मे हैव, द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट आई मे हैव, इनका भी वैल्यू कम होता जाएगा. बट सपोज रेजोल्यूशन हो जाए, रेजोल्यूशन का एक तरीका होता है कि अच्छा इसका रेजोल्यूशन हो ही नहीं सकता, इसको लिक्विडेट करो, उसको बेचो. एसेट बेच के बैंक्स को पैसे वापस देना, उसमें भी इफ इट हैपेंस क्विकली, एसेट वुड हैव हायर वैल्यू. So we will study insolvency and bankruptcy code in more detail to understand how it improved all these things. But recapitalization के अलावा insolvency and bankruptcy code also played an important role in improving the situation of banks in India. Then there were other aspects. India का जो Indian banking sector का जो cross border loans थे, international loans थे, they were very less. Because of this what happens, अगर international loans कम है
फॉरेन लोन्स कम है, इन दैट सिचुएशन इफ दिस हैपेंस, एक्सचेंज रेट वेरी करता है, दे वुड नॉट बी डैमेज्ड अ लॉट. सपोज हमने डॉलर्स में लोन ले रखे होते एंड डॉलर प्राइसेस वेंट फ्रॉम 70 टू 80, 70 रुपीज टू 80 रुपीज, इनका बर्डन बढ़ जाता बिकॉज दे हैड टू रिटर्न $1. अब $1 70 है 80 उन्हें फर्क नहीं पड़ता. तो दिस ऑल्सो प्लेड अ रोल. ओके, तो व्हाट इज बैंकिंग सेक्टर का सिचुएशन अच्छा हुआ है. अगेन हम जब फाइनेंशियल सेक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे और डिटेल में इनको समझेंगे. यहाँ पे जस्ट वी आर जस्ट ट्राइंग टू लिस्ट डाउन द रीजंस व्हाई इंडियन इकोनॉमी कुड बी डूइंग बेटर. कंजम्पशन, हमारा कंजम्पशन की बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर के बैलेंस शीट अच्छा है, बैंक्स का बैलेंस शीट अच्छा है. क्यों अच्छा है हमने 2-3 पॉइंट समझे, बट वी विल स्टडी मोर अबाउट इट इन द कमिंग चैप्टर्स. ओके, नाउ if their condition is good, they will be ready to give more loans. तो 2020 में, 2019-20 में जहां पे लोन का ग्रोथ रेट had come to single digit, मतलब लास्ट ईयर अगर एक बैंक ने 100 करोड़ लोन दिया था तो इस बार वो 10% से कम ही ग्रो हुआ है लोन. That has increased a lot in recent years. The year-on-year credit growth has moved into double digit and is rising across most. Because bank's balance sheet is good, they'll be able to do this. Are we getting it? So loans are available in the country. The loan ka growth is happening at a good rate. For MSME sector, this has grown at an average of 30.5%. MSME sector पहले अगर उसे 100 करोड़ लोन मिला था, अब 130 करोड़ मिल रहा है. That is the growth rate that we are talking about. तो अगर our businesses are able to get more loans, will they be able to start more initiatives? Will they be able to do better? Will the economy be able to do better entirely at altogether overall level? Yes, this is another factor. Now MSME sector especially इतने ज्यादा रेट पे क्यों ग्रो हुआ? बिकॉज गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है ECLGS, where they have kind of, through this they kind of provide credit guarantee. आप MSME सेक्टर को लोन दे रहे हैं, MSME सेक्टर इज नॉट एबल टू पे इट बैक, गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प द बैंक. दिस वाज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत आफ्टर द फर्स्ट कोविड-19 वेव. इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, MSME सेक्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे इन फ्यूचर, एंड दिस टॉपिक ऑल्सो विल बी कवर्ड इन डिटेल. बट what here we are trying to say, the loans to banks have given more loans, they have taken more loans, businesses have taken more loans, leading to what? Leading to more business, leading to India's economic situation improving. And then another key factor, the last thing that we are discussing is India का inflation बढ़ा, but it did not go to कि 40 years में highest level पे जैसे यूके में या यूएस में पहुंच गया है ना. एंड इन्फ्लेशन, आप देखेंगे आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड हेडलाइन इन्फ्लेशन एट 6.8% इन FY23. इट्स स्लाइटली मोर देन दैट 6% का लिमिट, बट इट्स स्टिल नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम जो कि द वेस्टर्न कंट्रीज आर फेसिंग. एंड देयरफॉर दिस रिलेटिवली लो इन्फ्लेशन रेट may also become a factor for why Indian economy would keep doing better. Right? Challenges bhi hain, but there are a lot of good things which has propelled, which has ensured that India remains the second highest growing economy in the world, and which would make us do better in future as well. ये बात समझ में आई है पक्का? अब देखो, why is it important to study this? अब आपसे मेंस में पूछा जाएगा ना कि वाई, एक इकोनॉमिक ग्रोथ वाला एक सेक्शन, पहला वाला बुलेट पॉइंट है, उसमें जनरल सारी चीजें आ जाती हैं. इंडिया अच्छा क्यों कर पा रहा है या इंडिया के चैलेंजेस क्या है. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज नॉट टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस, उस पर हम नहीं जाएंगे. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया थोड़ा सा मतलब इस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज गुड फॉर आवर प्रिपरेशन, बट व्हाट हैज हैपेंड ओवर द इयर्स, पहले ना वो बताते थे इस ग्रोथ में चैलेंजेस क्या क्या है, इसको हम कैसे डील करें. नाउ दे आर नॉट इंक्लूडिंग दैट पार्ट कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ऐसा है कि वो सारे बस अच्छी चीजें बोल रहा है, सब अच्छा हो. हाँ, तो ठीक है, अभी हम प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से वही सोचते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज इन मेंस एग्जामिनेशन कई बार देयर आर 8 क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमी व्हिच कम्स, 4-5 क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से ही हो जाएंगे.
ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये पहला चैप्टर में जो हमने पॉइंट्स पढ़े ना कि चैलेंजेस एंड व्हाई वाज इंडिया एबल टू डू वेल, ये आपका एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। उस टाइम आप अगर ये 5 बुलेट पॉइंट्स याद रखेंगे, यू विल बी एबल टू राइट सब्सटेंशियली गुड आंसर। ओके, लेट्स कम बैक टू दिस। Yes, she is saying ki sir, if a question is related to ki what are the advantages of consumption led economy when compared to investment led economy, so can this be given as an example? So yes, this could be given as an example कि जब एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी और एक्सपोर्ट्स हैम्पर हो रहे होते हैं तब कंजम्पशन हाई रहना एक फायदा होता है, बट ना इन्वेस्टमेंट फिर भी जरूरी है। देखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तभी वी वर एबल टू डू वेल इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, वो सारी चीजें है ना। तो ऐसे पता नहीं इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि नहीं, क्योंकि नो व्हाट आई एम सेइंग इज ये दोनों चीजें ना एक्सक्लूसिव नहीं है, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, इसीलिए थोड़ा सा उसे देखना पड़ेगा। लेट्स कम बैक टू दिस। तो इन टर्म्स ऑफ पीपीपी राइट नाउ इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड ओवरऑल इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया इज ग्रोइंग, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया सेज दैट इंडिया इज नॉट ओनली ग्रोइंग, दिस ग्रोथ इज काइंड ऑफ इंक्लूसिव। A growth would be inclusive if it is generating jobs. अगर जॉब्स जनरेट नहीं हो रही होती और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, मतलब कुछ वेल ऑफ लोग पूरा बेनिफिट अर्न कर रहे हैं एंड पुअर पीपल आर बिकमिंग पुअरर। बट इन दिस इकोनॉमिक ग्रोथ वेयर इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सॉरी second, India has the second largest growth rate among the major economies, has also created jobs. You look at this periodic labor force survey, September 2021 और September 2022 का डेटा देखोगे, unemployment among people whose age is more than 15 years have gone down from 9.8% to 7.2%. So this economic growth that we are having is also inclusive. It is generating jobs. Not only this, MSME sector. देखो, economic growth if it was coming from large corporates, so again Ambanis and Adanis would have benefited and not everyone would have been able to do well. But यहाँ पे MSME sector is also doing well. MSME sector has benefited from ECLGS, Emergency Credit Line Guarantee Scheme. It has succeeded in shielding micro, small and medium enterprises. हमने आपको बताया क्रेडिट गारंटी स्कीम है ना। More than 80% of MSMEs who availed ECGLS benefited were micro enterprises. Those were small enterprises. Inclusive growth. Small businesses are being supported. Employment is being created. Then MG Narega. MG Narega में 60% of the work in FY22 was in this category, work on individuals' land. Now what is this? देखो, MG Narega में what happens is you can be given a work or you can develop some infrastructure on your own land. उस पे काम करने को भी आपको पैसे मिलते हैं। तो 100 days statutory guarantee for job is there. You can get, so that 100 day में जो आप काम कर रहे हो, you can also work on your own field. You can create pond, you can create other such small infrastructure. In FY22, 60% of the work has happened in the work on individuals land category. It means हम जो अनस्किल्ड वर्कफोर्स भी है उसके लिए भी सिचुएशन इंप्रूव कर रहे हैं। नॉट ओनली इज दिस पर्सन गेटिंग 100 डेज का वर्क एंड पेमेंट फॉर दैट, बट एट द सेम टाइम फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ दिस पर्सन ऑफ अर्निंग इनकम इज गोइंग अप। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, फर्दर स्कीम्स लाइक पीएम किसान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैव आल्सो इंश्योर्ड दैट व्हाइल वी आर ग्रोइंग, पुअर पीपल are able to get some basic support. PM Kisan में farmers throughout the country, except some farmers who have much higher amount of land and कुछ और factors हैं, except some of the farmers are getting 6,000 rupees a year. Similarly, under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, around 80 crore people are getting 5 kg of food grains free. This has been going on since COVID के बाद पहला announcement हुआ था, तब से चल रहा है। Initially it was brought for 3 months, but now it has been continued even till now. Okay, so all these things Economic Survey of India says is contributing to growth which is inclusive in nature.
An UNDP report in July 2022 stated that the recent inflationary episode in India would have low poverty impact. Why? Because of प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. फ्री में तो इन्फ्लेशन बढ़ भी रहा है, गेहूं के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, but it may not have a lot of negative impact on people in India, on poverty level in India. Why? Because we are providing, government is providing them food at affordable price. वैसे भी 2 रुपीज पर केजी होता अंडर NFSA, बट अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इट इज फ्री. तो उनके लिए एज सच कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, विच वुड बी बेनिफिशियल. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ऑल्सो shows improved rural welfare indicators from FY16 to FY20, covering aspects like gender, fertility rate, household amenities and all. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमने पढ़ा है ना, ये हेल्थ सेक्टर, हेल्थ में हमने पढ़ा था NFHS में कि अदर देन 2-3 थिंग्स, ओबेसिटी, अनेमिया और एक और चीज था, 3 चीजें थी जहां पे चाइल्ड वेस्टिंग. These are the 3 things where we haven't done well, otherwise situation has improved. All these things tell us that growth is inclusive. Okay, so what is the outlook for 2023-24? What would happen in 2023-24? So this growth trajectory where we are going, where our growth is among the best in the world, growth rate is among the best in the world, will be supported by increased domestic consumption, high capital expenditure and structural reforms which are taking place. For example, banking sector में reform हुआ है, tax sector में reform हुआ है, GST आया है और insolvency and bankruptcy code. All these things would support the future growth that would happen. Recessionary tendencies in advanced economies may slow down the monetary policy tightening. This could support the FPI flow towards India. This is another factor. What we are saying, 2022-23 में इन्फ्लेशन बहुत हाई रहा है, जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग हुई है, बट नाउ दे आर शोइंग रिसेशनरी टेंडेंसीज, जहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रहा है. अगर वो होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग को थोड़ा लूज किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट में आइदर बी केप्ट स्टेबल और मे बी स्लाइटली रिड्यूस्ड. इन दैट केस more money would start flowing towards India. These are some of the factors which would support India's future economic growth, but कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उसे हिंडर करेंगे. वही जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज. कल रशिया ने डाल दिया न्यूक्लियर बॉम्ब, ऐसा नहीं करेगा बट डाल दिया यूक्रेन पे न्यूक्लियर, कुछ ऐसा हरकत उल्टा सीधा हो गया, दैट में बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द एंटायर वर्ल्ड. दैट इज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, मल्टी-डिकेडल हाई इन्फ्लेशन, एडवांस इकोनॉमीज, टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. व्हाट इफ हमने बोला है कि ये लूजन होगा बट वो नहीं हुआ, इन्फ्लेशन रिमेन्स हाई, एंड इफ दिस कंटिन्यूज there is very good chance that inflation may remain very high. And then global growth is expected to go down. जैसे global growth is forecasted to slow from 3.2% in 2022 to 2.7% in 2023. अब global growth अगर नीचे जाता है तो इंडिया is linked to global growth. इंडिया उन्हें एक्सपोर्ट करेगा, सारी चीजें करेगा. तो these are some of the factors which may hamper India's economic growth. Okay. तो सर्वे क्या प्रेडिक्ट कर रहा है? सर्वे इज सेइंग दैट इन फाइनेंशियल ईयर 2024, दैट इज इन द नेक्स्ट ईयर, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट वुड बी अराउंड 6.5%. दे से दैट actual real outcome of the real GDP, actual outcome of the real GDP growth will probably lie in range of 6% to 6.8%, depending on the trajectory of the economic and political development globally. But on average, they have said it would be around 6.5%. So what has been in recent years, what has been growth rate of India's economy? तो अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 2019 में, 2018-19 वाला FY19 में India was growing at 6.5%. Then in 2019-20, 3.7%. This is before the COVID year. Then in March 2020, COVID struck. Uस time our growth became negative. Our GDP actually declined. But because of high base rate, in FY22, we saw 8.7% का growth. In 21-22, what would happen in 22-23? As per the recent estimates given by the finance ministry, we are expected to grow at 7% this year. और अगले साल कितने रेट पे ग्रो करेंगे? That is 2023-24 में what will be our rate of growth? 6.5 is what Economic Survey of India is saying. 6.5% is the estimate of Economic Survey of India. What is
बजट एस्टिमेट, अभी बजट तो रिलीज हो गया ना, तो मैंने बोला ना मैं बजट का भी थोड़ा सा डेटा डालना शुरू करूंगा। बजट में ना उन्होंने रियल ग्रोथ रेट बताया ही नहीं है, देव सेड कि नॉमिनल ग्रोथ वुड बी 10.5%। अरे हंसो मत यार, सच में नहीं बताया बजट में, दे हैवंट सेड कि व्हाट विल बी द रियल ग्रोथ, दे सेड नॉमिनल ग्रोथ वुड बी 10.5%। तो नाउ अब 10.5% को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसे पिछले साल के भी फिर नॉमिनल से ही कंपेयर करना चाहिए, पिछले साल के हम उसे रियल से कंपेयर नहीं करेंगे। तो आई हैव आल्सो गिवन यू जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर FY23 नॉमिनल 15.4%। तो जीडीपी ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो रहा है, उसका बहुत सारे फैक्टर्स है, ग्लोबल जो प्रेशर है दैट इज अ मेजर फैक्टर एज पर फर्स्ट। तो आप देखेंगे next year, that is in 23-24, our GDP is expected to go beyond 300 lakh, $3 trillion। हम 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनना चाहते थे ना, यहाँ पे 3 ट्रिलियन वाली, 3 लाख करोड़ वी विल बी क्रॉसिंग दिस ईयर, वी आर एट 273 लाख करोड़। इसमें 10% का इंक्रीज होगा, रियल और नॉमिनल 10% का इंक्रीज होगा, दैट इज एस्टिमेटेड, एंड वी विल गो टू 300 lakh crores. Okay, now budget. Please note this: budget did not put out real GDP growth projection. However, Economic Survey of India 2022-23 released on January 31 has forecasted a real GDP growth rate of 6.5%. Budget नहीं बताया, but Economic Survey of India. So, I hope we have some understanding of what are the factors which may be hampering India's economy. What are the factors which ensures that we would have robust growth rate, and what is the outlook. We have clarity on this. Okay, there are lots of online doubt, मैंने भूल गया यार, सॉरी गाइस, मैं एक बार देख लेता हूँ। इन इकोनॉमी करंट अफेयर्स ओनली इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आर सफिशिएंट, ये तो बता दिया। विल यू कवर होल ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बजट? हाँ, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड बजट हमारा पूरा यूट्यूब पे जाएगा, नॉट द एंटायर इकोनॉमी करंट अफेयर्स, बट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड बजट वुड बी ऑन यूट्यूब। Sir, is there any course regarding answer writing practice for 2024? या 2024 के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के कोर्सेस वुड कम आफ्टर जून, है ना? अभी तो 2023 के कोर्सेस। सर, वाज ऑपरेशन ट्विस्ट ऑफ आरबीआई अ टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? देखो यार, अब क्या है ना, ऑपरेशन ट्विस्ट वाज अ मैकेनिज्म टू एंश्योर मोर फंड फ्लो। देखो, इट्स नॉट कनेक्टेड, इट्स नॉट कनेक्टेड टू दिस टॉपिक, बट लेट मी ब्रीफली टेल व्हाट वाज ऑपरेशन ट्विस्ट। इन ऑपरेशन ट्विस्ट व्हाट आरबीआई डिड, शांति रखेंगे। In operation twist, what RBI did? RBI bought long-term securities and sold short-term securities. तो जब RBI long-term securities खरीद रहा है, तो उसने long-term के लिए मार्केट में पैसे डाल दिए, है ना? RBI जब short-term security बेच रहा है, तो short-term के लिए उसने तक कर लिया। तो in a way, by this, it did not increase the net amount of money in the economy, but ensured that money is available for longer period. This was operation twist. It was not for inflation, it was for not for controlling inflation, it was for increased monetary supply. तो ये operation twist ना हमने 2019-20 में किया था, when economy was not doing well. तो वहां पे inflation control वाला was not the target. Sir, the growth of 6.5% is real GDP growth or nominal? 6.5% is real. जब तक हम नॉर्मल बात करेंगे तो इट इज रियल जीडीपी, जब हम नॉमिनल की बात करेंगे विल से कि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉमिनल जीडीपी। पेंट अप डिमांड वाज बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट। देखो, पेंट अप डिमांड वाज बिकॉज उस टाइम कंजम्पशन नहीं हुआ, दैट वाज नॉट बेस इफेक्ट। इज जब ना, बेस इफेक्ट इज समथिंग एल्स, प्लीज अंडरस्टैंड। उस टाइम का जीडीपी नंबर वाज मच लेसर, उस टाइम का इन्फ्लेशन नंबर वाज मच लेसर, तो अभी थोड़ा सा भी इंक्रीज शोज मच हायर चेंज, है ना? बट पेंट अप डिमांड का कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ना। Sir, will there be module wise course for current affairs? I want to join science tech and environment. I do not think. ले लेना, वो भी दे देंगे 5-5 हजार में। What is the difference between non-financial private sector debt and non-financial corporate debt? Corporate debt, non-financial corporate debt एक छोटा सेगमेंट है, प्राइवेट सेक्टर डेट बड़ा सेगमेंट होगा। कॉर्पोरेट डेट के अलावा भी फाइनेंशियल डेट हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के, तो वो सब प्राइवेट सेक्टर डेट में इंक्लूडेड है। घी दूध की नदियां बह रही हैं, पी लो। ओके, हाँ, आर प्रीलिम्स प्रोग्राम पीएमपी स्टार्टिंग ऑन 6 February, तो आप लोग सब डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेट्स कम टू इंडियाज मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक। अभी वी टॉक्ड अबाउट व्हाट हैज हैपेंड ओवर द ईयर,
what has happened over the year, what is expected in the coming year. Economic Survey of India says that 6.5% will be our economic growth rate. Finance Minister says that 10.5% nominal. उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा. Okay, now India's medium term growth outlook. इसको ना पहले समराइज कर देते इस पूरे चैप्टर को. In this entire chapter, they are saying here we have put in a lot of effort. Between 2014 and 2022, a lot of reforms have taken place. Government has improved the condition of banking sector by providing recapitalization. Things like insolvency, bankruptcy code were brought. Banking sector का situation improve हुआ. Infrastructure में a lot of spending is happening, right? But in spite of all those efforts, the growth hasn't been as great. The growth hasn't been as great. जैसे कि हम इतने सारे इनिशिएटिव्स भी लेके आए, फिर भी ग्रोथ इतना अच्छा नहीं रहा. गवर्नमेंट सेज दैट ऐसा पहले भी हुआ था. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाजपेयी, he had put in a lot of effort between 98 and 2002. But growth picked up only from 2003. Because a lot of international factors at that time had affected us negatively in spite of a lot of economic reforms. So they are, through a table, they are comparing both the periods. उन्होंने कांग्रेस के रिफॉर्म्स वगैरह सबसाइड कर दिए. 2004 से 14 में कोई रिफॉर्म की बात नहीं करी है. तो दे हैव सेड कि अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स हैपेंड. अब ठीक है, वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, हम इस टॉपिक को समझते हैं. तो अगेन व्हाट दे आर सेइंग इज बिटवीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाजपेयी एरा अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स हैव टेकन प्लेस. बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म हुआ. पहले बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट होता था ना, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई. तो आफ्टर लिबरलाइजेशन, पहले फॉर सम बिगर लोन्स इट वाज डीकंट्रोल्ड. लेटर अदर स्टेप्स वर टेकन. दिस इज द वाजपेयी एरा. इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉट ऑफ स्पेंडिंग हैपेंड. उस टाइम का द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल was started at that time. Disinvestment में a lot of, a new ministry of disinvestment was created. Who was the minister of disinvestment? Arun Shourie? Jaitley नहीं, Shourie. Arun Shourie. Arun Shourie नाम है ना? Am I right? The economist who's unhappy with the current BJP government. He was expecting कि उन्हें finance minister बनाया जाएगा 2014 में. नहीं, वो एक दूसरे हैं. Arun Shourie is one of the good economists and उनको डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बनाया गया था. और बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन, जैसे मारुति उद्योग का प्राइवेटाइजेशन, विदेश संचार निगम लिमिटेड का प्राइवेटाइजेशन, और कईयों में और डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था. प्राइवेट सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ाया गया. तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स उस टाइम भी हुए थे. बट इकोनॉमिक बूम इन इंडिया अकर्ड बिटवीन 2003 एंड 2008. तो देयर वर मेनी रीजंस फॉर इट. वन दे से कि देखो, एक तो ना इंडिया डिड न्यूक्लियर टेस्ट, बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ सैंक्शंस वर ब्रॉट इन. देन द ईस्ट एशिया क्राइसिस अकर्ड इन द लेट 19. ईस्ट एशिया क्राइसिस में क्या हुआ, ईस्ट एशिया में ना बहुत सारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आया हुआ था. तो सडनली जब उनका इकोनॉमी थोड़ा सा नीचे जाने लगा, तो सारे वेस्टर्न कंट्रीज के जो इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया. तो देयर वाज अ बिग बस्ट व्हिच टुक प्लेस एंड इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज वेंट डाउन फॉर सम टाइम. देन .com boom which had occurred early 2000 में वो भी क्रैश हुआ. बहुत सारे नेगेटिव ग्लोबल फैक्टर्स रहे, बिकॉज ऑफ विच वी वर नॉट एबल टू डू वेल. बट वो नेगेटिव ग्लोबल फैक्टर would eventually fade away. This led to a lot of growth between 2003 and 2008. वर्ल्ड इकोनॉमी का जो एवरेज ग्रोथ रेट था उससे डबल पे इंडिया kept on growing. So this chapter of Economic Survey of India says that something similar at the reform level has happened between 2014 to 2022. Growth पर इतना ज्यादा नहीं हो पाया. But they say that as the global pressure recedes, what would happen? Because we have taken so much reform steps, India would do very well in 2023 to 2030 period. This is the summary of what is going to be discussed in this entire chapter. This is the idea that is going to be
discussed in the entire chapter. ये हमें पहले ही समझ में आता है. Once we know the summary, we'll understand the structure of the notes, है ना. और हमें इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ 1990s एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ 2014 से 2022 में कंपैरिजन करने को भी सवाल आ गया. We'll be able to talk about it, we'll be able to discuss about it. बट देखो, कभी भी हम जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना, तो नो वन कैन sideline the reforms which took place in 1991. So in this chapter also, we will start with the reforms which took place in 1991, how those reforms were further taken ahead by NDA 1, the Vajpayee era, कैसे उसका बेनिफिट यूपीए एरा में इंडिया को मिला, how similar kind of reforms have taken place again in the NDA 2 era, जहां मोदी जी एरा बोल सकते हैं आप, and how its benefit would come to India between 2003 and 2023 and 2030. ये हमें पढ़ना है पूरा. एक ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया पूरा ओवरऑल. what will we be discussing? So we'll talk about reforms at that time, its impact. We'll talk about reforms at this time. Its impact would be good. That is what Economic Survey of India is trying to convey. Got it? So let's talk about India's history of reforms in India. तो सबसे पहले 1991 reforms. What was the need of 1991 reform? India's macroeconomic stability had suffered in late 1980s and early 1990s. Our fiscal deficit was very high, inflation was very high, and this led to very poor condition, balance of payment crisis. And here, Manmohan Singh as finance minister had to come and change India's economic structure. India economic structure नहीं बोलेंगे, economic policy drastically by bringing liberalization, privatization and globalization. So what were the key reforms which took place? We liberalized trade and investment. What is meant by liberalization of trade and investment? पहले बहुत सारे ट्रेड्स थे जहां पे गवर्नमेंट हैड मोनोपोली और there was a lot of licensing which was needed. Private sector could not work as openly. That those trades were liberalized so that private sector would be able to play a more effective role. Similarly, investment, especially foreign investment, were restricted in a number of sectors, in most of the sectors. Liberalization took place at that front. Import licensing on almost all intermediate inputs and capital goods was done away with the entry of restriction for firms while the entry restrictions for firms were also simplified. Privatization में आप देखेंगे, new policy encouraged entry of private sector firms by ending the public sector monopoly in many sectors. ऐसी FDI up to 51% through automatic route was provided in many of the sectors. Exchange rate was also made flexible. पहले exchange rate को हम control करते थे. Exchange rate was made flexible. It was allowed to depreciate. So that export वगैरह में we would become more competitive. Right? So these were some of the steps which were taken, and it had positive impact. In 1980s, India's economy grew at the rate of 5.5%, which between 93 and 2000 we grew at 6.3%. So these LPG reforms had positive impact on economic growth. Plus, it also had positive impact on India's global trade, India's international trade. You would see that external trade visible impact on external trade as total goods and services to GDP rose from 17.2% in 1990 to 30.6% in 2020. So external trade जो goods में हो रहा था, उसका contribution in GDP was only 17.2% in 1990, which went up to 30% in 2020. So this indicates what? कि overall economic trade भी improve हो रहा था. इसे ना एक बार मैं चेक करूंगा, ये मैंने 2000 को 2020 तो गलती से नहीं लिख दिया, because the comparison is of that time. I'll recheck it. Did we understand this? So LPG reforms हुए, फोकस यहाँ पे उन पे ज्यादा नहीं है. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने ब्रीफली उसे डिस्कस किया है. दे हैव टॉक्ड मोर अबाउट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द वाजपेयी एरा. These reforms had continued. Foreign investments were liberalized further. More FDI was allowed in the country, which led to coming inside the country of non-debt creating capital. Rather than through loan,
through investment, capital was being brought in the country. Similarly, telecom sector was completely reformed. पहले BSNL also acted as kind of regulator or license giving or body, but अब उसे एक separate operator बनाया गया. TRAI was created, Telecom Regulatory Authority of India, to regulate the telecom sector. Private players entry was simplified and they could also participate. So it was only after 99 आप देखेंगे बहुत सारे private players इंडिया में एंटर हुए. लैंडलाइन फोन्स में भी आप देखेंगे टाटा के फोन्स लैंडलाइन कनेक्शन आने लगे थे. बिफोर मोबाइल बिकेम वेरी कॉमन, वी यूज्ड टू हैव लैंडलाइन कनेक्शन. इन द BSNL era, not everyone had a landline phone at home, but after this liberalization you would see that a lot of local players had also come up. जैसे मेरे घर पे रेनबो कोई कंपनी थी, उनका फोन लगा था. मेरे बगल में मेरा दोस्त था, उसके यहाँ टाटा वालों का लैंडलाइन लगा था. BSNL वाला हमारे पास नहीं था. So that liberalization took place here in 99. Then disinvestment and privatization was also supported more. एक अलग से ministry was created. I told you Arun Shourie was the minister of disinvestment here. Then equities in some central public sector enterprises were sold and many companies were privatized. Privatized companies में जैसे मारुति उद्योग till that time was a public sector entity. It was privatized. Hindustan Zinc, Bharat Aluminium, Videsh Sanchar Nigam Limited, a lot of these companies were also privatized. Are we understanding? The reforms, they're talking about reforms which took place during Vajpayee era. Infrastructure development, as I already told you, a lot of money was invested in infrastructure development. India's, of that time, till that time, biggest infrastructure project, the Golden Quadrilateral project, was started during Vajpayee era. इसके अलावा there were a number of structural reforms. For example, we had seen that in 1980s and early 1990, because of macroeconomic instability, because of high fiscal deficit, because of high government debt, we faced balance of payment crisis. So we brought what is called FRBM Act, Fiscal Responsibility and Budget Management Act. It gave targets to government कि आपको हर साल रेवेन्यू डेफिसिट इतना कम करना है, फिस्कल डेफिसिट इतना कम करना है, डेट टू जीडीपी रेशियो इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देना. इट गेव दोस टारगेट्स आर नो मोर रिलेवेंट, बट इट गेव दोस टारगेट्स कि बाय 2007-8 दिस इज व्हाट यू हैव टू अचीव. So there were steps at policy level also which were taken. Structural reforms was taking place in the economy. Similarly, banking sector reforms took place. In banking sector reforms, deregulation of interest rate happened. पहले before 1990s, interest rate क्या charge करेगी बैंक was dependent on RBI. RBI regulated it. In 93-94, for the first time, for large loans, it was deregulated. बाद में अभी जैसे आपको एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड इंटरेस्ट रेट वाला सिस्टम चल रहा है, हम पढ़ेंगे उसे डिटेल में, MCLR है. ऐसे ही यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम वी ब्रॉट बेस रेट एंड दोस काइंड ऑफ मैकेनिज्म्स which ensured that banks would have more say on the interest rates. Similarly, a SARFAESI Act was brought. What was SARFAESI? देखो अभी हमने आपको IBC के बारे में बताया ना, if a business is not doing well, so banks money gets stuck there, and if this resolution does not happen fast, then the value of assets also keep decreasing, and the recovery by bank is much lesser. तो IBC was brought only in 2016. इससे पहले कुछ इनिशिएटिव्स थे. One major initiative was SARFAESI Act that was brought at that time. In SARFAESI Act, what is done is bank can take control over the security. So SARFAESI Act allowed banks and financial institutions to recover their dues by proceeding against the secured asset of the borrower or guarantor. आपने जब लोन लिया होगा तो आपने कोई सिक्योरिटी दी होगी, उसके अगेंस्ट बैंक कैन मूव एंड टेक कंट्रोल ऑफ दैट. उसे बेच के या किसी और मैकेनिज्म से दे कैन रिकवर लोन. तो दिस SARFAESI वाज ब्रॉट ओनली एट द टाइम ऑफ वाजपेयी एरा. तो व्हाट वी आर सेइंग इज, व्हाट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज सेइंग इज, बहुत सारे रिफॉर्म्स हो रहे थे. प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा था, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स भी हो रहा था. समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग इवन नाउ, बट at that time growth rate was not as high. Why? Sanctions imposed by USA on India impacted capital flow in the country.
weather vagaries, the period between 2000 and 2002 also witnessed 2 successive droughts. This was also the time जब आपको अनियन प्राइसेस और या फिर सरसों तेल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े थे. आप शायद पैदा नहीं हुए होंगे. जो लोग थे ऐसे, हम मैं 10-12 साल का था इस टाइम, तो आई कुड रिमेंबर कि सरसों, एंड माय फादर हैड अ ग्रोसरी, so I remember that was the time when oil prices had went up like anything. My father was a hardcore supporter of Vajpayee ji. So my father used to convince everyone कि भाई तेल प्राइसेस दूसरे कारणों से बढ़ रहे हैं, वाजपेयी जी बहुत अच्छे लीडर. वो जो सपोर्टर होते हैं वैसे ही सपोर्टर नहीं, ही वाज एक्चुअली, वाजपेयी जी वाज वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स दैट वी हैव हैड इन दिस कंट्री. तो वो करा भी जा सकता है. एनीवेज, तो आई एम सेइंग कि आई कैन रिमेंबर दोस टाइम्स कि दिस द weather vagaries had also played a role in hampering India's economic growth. Then end of tech boom had become a concern. Balance sheet of India's banking sector and corporate sector was also under repair during this period. Under repair क्यों? They were under a lot of stress in the 1980s and early 1990s. So they were in the process of repair. Something that happened in 2015, 16, 17, 18, 19 in India. That repair that happened in India. These factors overshadowed immediate impact of reforms undertaken by government. Government ने बहुत सारे reforms लिए, but these factors did not allow it to be visible in growth rate. But 2003 to 2008 में India participated in the global boom, where global growth average क्या था? 4.8. India का growth average क्या है? 8%. Why was this possible? This was possible because of the reforms which were taken during the Vajpayee era. बात समझ में आ रही है? Now they say that something similar is happening here. Reforms for New India, सबका साथ, सबका विकास. Before 2014, the reforms primarily catered to product and capital market. आप वो देखेंगे वहां पे. When we are talking about liberalization, privatization, reform, we are mostly focused on product and capital market. Liberalize कर दो, capital market, FDI, FII, उसमें liberalization लेके आओ. तो those reforms have kept on taking place. Product and capital market reforms have kept on taking place. But now, broad principles of reforms after 2014 has been प्रोडक्ट मार्केट. अरे ये कौन बना सकता है, ये प्रोडक्ट कौन बना सकता है, ये प्रोडक्ट कौन बेच सकता है, दैट इज प्रोडक्ट मार्केट. तो पहले उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस थे ना, है ना वो. तो लेट्स कम बैक टू दिस. तो आफ्टर 2014 द ब्रॉड प्रिंसिपल्स इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैव बीन टेकन आर these four. These four areas are the focus areas of government when it comes to reforms, and through these four areas they are promoting ease of doing business and ease of living. What are these four areas? Creating public goods. Creating public goods में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा इंप्रूव कर रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं. देन ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस. इन ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस यू विल सी दैट वी आर रिफॉर्मिंग आवर लॉज. जैसे कंपनीज एक्ट हैज बीन अमेंडेड सो दैट some trivial procedural lapses do not remain a criminal offense. पहले procedural मतलब हम कुछ फाइलिंग में procedural गलती कर देते थे, that was a criminal offense. तो governance we are making trust based. Then private sector participation is increasing. Here private sector participation is increasing, one because of crowding in, but also because disinvestment is taking place. The way disinvestment was taking place at that time. Further, अपना जो नया public sector वाला policy है, it says that government would remain only in strategic sectors, others would be privatized. And then agricultural productivity पे बहुत सारा focus है. Soil health card, है ना. Economic Survey of India in this chapter mentions, has given only a small paragraph, but on agriculture sector a lot of steps have been taken. Soil health card is only one aspect, है ना. ऐसे सोचो कि इंश्योरेंस रिलेटेड इनिशिएटिव्स फॉर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इरिगेशन रिलेटेड इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि सिंचाई योजना, है ना. एफपीओ कितने प्रमोट करे गए हैं. देयर आर टारगेट्स दैट 10,000 मोर एफपीओ वुड बी क्रिएटेड. ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, इन सारी चीजों पे कितने स्टेप्स लिए जा रहे हैं. ई नैम, डिजिटाइजेशन, अ नंबर ऑफ, हमने तो शायद लाइक फॉर दोज ऑफ यू हु आर पार्ट ऑफ प्रीकम मेंस बैच, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में ये पढ़ा था कि आई थिंक योजना या कुरुक्षेत्र में पढ़ा था
कि how technology has played a very important role in agriculture sector. So all those reforms have taken place in agriculture sector. Through these reforms, we want to promote ease of doing business and ease of living. And these reforms were supposed to give a lot of push to India's economic growth. But because of various factors, it could not happen. But from 2023 to 2030, something that happened between 2003 and 2008 would happen. Economic Survey of India predicts that our economy would do very well in coming times if some of the small challenges that remains are taken care of. Okay, so let us look at these four aspects in slightly more detail. Creating of public goods to enhance opportunities, efficiency and ease of living. Creation of public good. Public good creation matlab public infrastructure and all those things are getting improved. So a quantum leap in policy commitment and outlay for infrastructure is now visible in last few years. Look at this graph. This I've taken from Economic Survey of India only. So center's capital expenditure in lakh crores. Ye blue wala line. So you see that last year only, India's in this year only, this financial year 2022-23, this financial year only, India central government had allocated more than 7 lakh crores in capital expenditure in the budget. As a percentage of GDP also, this was more than 2.5%. This is financial year 2023. Budget estimate, like budget में हमने क्या allocate किया था. And it has kept on going up. 2020-21 COVID-19 year, 2021-22, 2021-23. As a percentage of GDP also it's going up. In the overall absolute terms also it is going up. Vajpayee era, क्या बोला हमने? Biggest infrastructure project that should have given good results. थोड़ा late आया. यहाँ पे भी they are saying we are investing a lot in infrastructure. This should give result, but because of various factors, because of various global factors and some domestic factors too, the income growth was hampered. GDP growth was hampered. Something similar is happening now. Otherwise, infrastructure investment बहुत सारा हो रहा है. In fact, मैंने इस साल बजट 2023-24 का भी डेटा डाल दिया. This is not Economic Survey of India का डेटा. Economic Survey of India पब्लिश होने के बाद this data came to 31st जनवरी को Economic Survey of India आया and 1st of Feb को बजट आया. So what is budget saying? Budget is saying for FY23 कितना था? More than 7 lakh crore was allocated for capital expenditure. This year they have given 10 lakh crore, an increase of 33% in capital expenditure. Did we understand this? Are we clear about it? Then this will be 3.3% of India's GDP. In FY23, this was more than 2.5% of India's GDP, but less than 3%. But now, next year when Economic Survey of India comes with the next bar, it will be 3.3% and 10 lakh crore. Right? We will repeat this in when we are doing budget. But what I wanted was we should be able to connect Economic Survey of India with the what has been announced for next year in the budget. We should be able to connect it so that हम एक साथ जब पढ़ेंगे तो जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, सपोज यू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कि इंडिया public expenditure, public capital expenditure have kept on increasing every year in last 8 years. You would see that no, it went down also. And in absolute terms also, it went down. You see, it's going down. Here, public expenditure was 2014 was higher. It came down. Capital expenditure. It went up, it went up, it came down. It went up, it went up, and in last few years, it has been going up. So pattern based question होता है उसके लिए भी. In terms of in percentage of GDP, has it kept on going up only? No, you see that यहाँ पे decrease हो रहा है ना? So it has not consistently went up. But you also know that roughly what is the estimate for 2024, financial year 2024, 3.3% of the GDP or 10 lakh crores. Now, do you remember, you must be knowing this, that when we talk about capital budget or capital expenditure, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देता है स्टेट को,
It goes to revenue expenditure. So this 10 lakh crores that we are talking about, this 10 lakh crore that we are talking about is government, central government's direct expenditure. इसके अलावा central government is also promoting states to invest more money in capital expenditure. उसके लिए वो grant in aid भी दे रहे हैं, प्लस इंटरेस्ट फ्री लोन भी दे रहे हैं. तो इंटरेस्ट फ्री लोन तो चलो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, बट ग्रांट फॉर सेंटर इट वुड कम इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट effectively it is capital expenditure. So if here we also talk about this, effective capital expenditure of the center is budgeted at around 13.7 lakh crores. Why effective? Because this is given as in the form of grants to states, which will be 4.5% of the GDP. What is otherwise the situation? 3.3% of the GDP. But effective capital expenditure of the center is 4.5% of the GDP here in this way. Are we understanding this? Are we able to connect this? Pakka? Fine. Key initiatives in recent years. Again, when we'll come to the chapter on infrastructure, we will study these initiatives in much more detail. Here, we are just briefly mentioning it because we are just trying to do the comparison. There a lot of money was invested in infrastructure in the Vajpayee era, and in the Modi era also we are investing a lot of money on infrastructure, and a lot of initiatives related to this are there. Just a national infrastructure pipeline was announced in 2019. Initially it was started with around 6,000 projects, but now around 9,000 projects across 35 subsectors and are being implemented under this national infrastructure pipeline for improving infrastructure in the country. Similarly, national monetization pipeline was announced in 2021. Again, as I'm saying, we will cover each of these things in more detail in the infrastructure wala chapter. What was national monetization pipeline? National monetization pipeline is how government will mobilize more money for infrastructure by monetizing government assets. लैंड है उसे बेच के या उसे लीज करके कैसे हम ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लेके आएंगे. That was announced in 2021. Then public digital infrastructure पे a lot of focus has happened. RBI says that India's core digital economy has grown 2.4 times the overall economic growth between 2014 and 2000. So overall economic growth in 2014 to 2019, which has been there, उससे 2.4 times faster has been the growth rate of digital economy. It's because digital infrastructure has been improved like anything. You know it from the perspective of how many UPI transfers are taking place, how much internet availability is there today, how many of us are using smartphones. When you file application, like till 2014 or 15, you had to mail your form to UPSC. Mail मतलब not Gmail वाला mail, physical. आपको पोस्ट ऑफिस में जाके वो स्टैंप लगा के मेल करना होता था. I remember my first attempt 2012 में. I was working at हैदराबाद, और जो नियर बाय पोस्ट ऑफिस था वहाँ स्टैंप भी वो नहीं मिला मुझे. आई हैड टू गो टू द वो GPO होता है ना कुछ मेन वाला. पहली बार मैं हैदराबाद के इतने कोनों में घूम रहा था, एंड वी हैड टू. तो ये सब चलता था उस टाइम. 2012 की बात कर रहे हैं. उस टाइम 4 ही अटेम्प्ट हुआ करते थे, तो उसके बाद मैंने दिए नहीं. उसके बाद आई स्टार्टेड गिविंग अटेम्प्ट ओनली आफ्टर क्विटिंग द जॉब. So anyways, are we understanding कि a lot of focus on digital infrastructure has happened? उसमें what has all that contributed to? So it has contributed to financial inclusion, है ना. Aadhaar with Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and JAM Trinity has contributed to more and more people using bank accounts, more and more people getting DBTs in an effective manner. It has been possible because of improved digital infrastructure. Then economy has become more formalized. Why would economy become more formalized with the help of digital infrastructure? Because we are going for online transaction. Chances are those would be tracked. Chances of formalization is higher. But more importantly, things like GST network. It's completely online. आपको GST filing online ही करनी पड़ती है. Usage of UPI, online transaction. Then for digital identities, Aadhaar, registration of unorganized workers on e-Shram portal, street vendors on Swanidhi, registration of street vendors on Swanidhi,
tax paying firms on GST and MSMEs on Udyam portal. All these things have contributed towards recognition and formalization of the economy. Governance has also improved. Online portals की वजह से आपको government services, a lot of around more than 1,000 government service, state government and central government service could be accessed to one portal. So these are various examples of how we are talking about infrastructure, how infrastructure में a lot of investment is taking place. First we spoke about कि कैसे infrastructure में investment बढ़ा है. Then we spoke about national infrastructure pipeline and all. We are talking about now how digital infrastructure has contributed to improvement in the condition. Financial inclusion has improved. What else has happened? Formalization has happened. Then governance has improved. Governance, ease of doing business has improved. There are various online portals through which a lot of your work could be done. Then PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is a GIS based portal through which various ministries coordinate. So understand the background of PM Gati Shakti. We must have seen this in ORN also. क्या होता है, कोई रोड बना के चला जाएगा, municipality would come and make road, and then वो pipeline वाले would come. They will dig up the road, right? They will dig up the road, they'll put in pipeline, and then they'll go. Then electricity वाले आएंगे, they'll again dig up the road. Then ORN में it doesn't happen, but railways वाले आ सकते हैं, because वहां से railways निकलना होगा. So because of lack of coordination between these different departments and these different ministries, a lot of wastage of resources was taking place. PM Gati Shakti is a GIS based platform which brings together multiple ministries for integrated planning and coordinated implementation of multimodal infrastructure project. There would be coordination. Road ministry would know कि यहाँ से एक रेलवे ब्रिज जाने वाला है, नीचे टूटने वाला है, पहले क्या बनना चाहिए. इस तरीके से there would be better coordination for improving infrastructure condition in the country. Similarly, कुछ और recent initiative है जैसे open network for digital commerce and account aggregator framework for of RBI. Again, we will study these things in more detail in future, but इसे समझो अभी. ONDC, open network for digital commerce. What it is trying to do is, if you want to create your own e-commerce platform, so what are the entities that you should be able to connect to? It is helping you connect to those entities. It is giving you open protocol or free protocols which could be used for developing those platforms. ऐसे ये situation है. तो इसमें again ONDC अभी बस थोड़ा सा समझ लो, ये e-commerce को promote करने के लिए है. We will study about it in more details. Okay, so what we are trying to say is infrastructure, not only the physical infrastructure, but digital infrastructure has also contributed a lot in changing situation today. And that is what Economic Survey of India is trying to say. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस वाजपेयी एरा में था, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे लॉट ऑफ फोकस इन टर्म्स ऑफ व्हाट डू यू से budgetary allocation, but also in terms of these programs is there, and therefore similar impact would be there in future. जैसे because of the contribution of Vajpayee era in 2003 to 2008 period, we saw boom in the economy. Something similar may happen between 2023 and 2030. Eventually conclusion उस तरफ जा रहा है. तो trust based governance. Trust based governance, उसमें there are first of all, why trust is important. Trust between government and people, between government and businesses. Why it is important? Because it simplifies a lot of things. Government को unnecessary हर चीजों को माइक्रो मैनेज नहीं करना पड़ेगा. People would also know कि कोई गलती होगी तो it's not that I'm going to go to jail. So I'll be able to innovate. I'll be able to fast track things. So we are saying that building trust between government and the citizen, businesses unleashes efficiency gains through improved investor sentiment, better ease of doing business, and more effective governance. How has this been achieved? How trust-based governance has been achieved? By something like insolvency and bankruptcy code. Now you will say, sir, why, how insolvency and bankruptcy code is leading to trust-based governance? One, insolvency and bankruptcy code is allowing a honorable exit mechanism. Now, what is this honorable exit mechanism? Let's say again, कि tomorrow my business is not doing well, and I want to shut it down and go. In the older system, this wasn't that easy. There were lots of rules, regulations, complications, and in that period, ये जो पूरा asset है ना, वो stuck रहता था.
तो क्लोजिंग अ बिजनेस इटसेल्फ वाज अ ह्यूज चैलेंज. नाउ वो ट्रस्ट कि यार वो अपना बिजनेस बंद कर रहा है, देयर मस्ट बी अ रीजन. सिंप्लीफाई दैट. व्हाई कीप इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड? This is an example of how we are moving towards trust-based governance. Insolvency and bankruptcy code में one aspect. Similarly, because of insolvency and bankruptcy code, so when we'll study insolvency and bankruptcy code in more detail, we'll get to know कि suppose I have borrowed money from him, and he is a creditor for me, he is a lender for me, he has lent me money. If I do not give his money on time, there is a mechanism that he could initiate insolvency procedure against me under insolvency and bankruptcy code. So what happens is, now I tend to give my money in a timely manner to him. I tend to give his money, his loan in a timely manner to him. This is also leading to more trust between businesses and public sector banks and other such entities. Are we getting it? How trust-based governance is being promoted by only by insolvency and bankruptcy code. Similarly, Real Estate Regulation and Development Act, RERA के through buying or investing in real estate has been simplified. RERA registered builders are there, RERA registered brokers are there, and you can trust them more. They are regulated by government. There are less chances that they would fraud with you, right? Similarly, decriminalization of minor offences under Companies Act, ये मैंने आपको समझाया था कि पहले a lot of procedural lapses could also be criminal offence. This led to unnecessary complicated things. This hampered formalization. This would do away with that. Better tax regime like GST, where we are in GST or even in direct taxes, where we are moving to away from human to human interaction and going for faceless assessments. That's also showing more trust. So we are not only investing a lot in public good, we are also moving towards trust-based governance. हमने 4 pillars बोले थे, which is the focus area between 2014 and 2022 for promoting ease of living as well as ease of doing business. उसमें infrastructure, second trust-based governance, third promoting private sector as a co-partner in the development. This was the third aspect, and fourth was agriculture, right? So third, disinvestment. You will see that between 2015 and 2023, around 4 lakh crore rupees of money has been mobilized by government through disinvestment only. Then a new public sector enterprise policy says that government will stick only with strategic sectors. बाकी सब they are going to privatize. आत्मनिर्भर भारत and Make in India programs के अंदर भी a number of steps were taken to improve the function working of private sector to help them during difficult times. जैसे various sector specific production linked incentive PLI programs are there. Here government is helping private sectors or industries which are government is incentivizing industries which are going to increase their production linked incentive. Then liberalization of policies towards foreign investment. ये भी क्या है, हम प्राइवेट प्लेयर्स को ज्यादा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सी व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग वाजपेयी एरा, ऑलमोस्ट सब में 51%, सारे सेक्टर्स में 51% ऑटोमेटिक रूट से आ गया था. अब ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में अप टू 100% ऑटोमेटिक रूट से. so much of liberalization has taken place. We are allowing private investment, foreign private investment also. National logistic policy was also set up in 2022. It has been launched to create an overarching logistic ecosystem for lowering the cost of logistics. One major problem that we face in India is our logistic cost is very high when compared to developed countries. आप जापान या फिर बाकी कंट्रीज चाइना इनसे कंपेयर करोगे तो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी आवर लॉजिस्टिक कॉस्ट इज मच हायर. इट हैम्पर्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया. आवर फैक्ट्रीज इवन इफ दे प्रोड्यूस समथिंग एट लोअर प्राइसेस, because of the logistic cost, overall selling price becomes very high, their competitiveness gets hampered. तो उसके लिए we have brought national logistic policy. MSME sector को भी government has supported a lot. So through all this, what we are saying that private sector के growth में government over the years have taken a lot of steps
जिसका रिजल्ट वुड सून कम. Similarly, agriculture. Here we have listed down some of the initiatives, but we will study much more, much larger number of initiatives in coming class. Okay, so in spite of all this, why has growth not taken place up to our full potential? Because of these problems. Jaise in Vajpayee era, what were the problems? Sanction because of nuclear weapon test. Sanctions because of nuclear weapon test. Balance sheet problems with our banks and corporate sector because of the previous problems. Then East Asia crisis, dot com bubble burst. These were some of the challenges. Poor infrastructure in the past. These were some of the challenges. There are some challenges which has hampered economic growth in this period. जिनको solve किया जा रहा है, but what were those challenges? One major challenge was balance sheet stress. What is this balance sheet stress? Corporate sector भी उनके ऊपर बहुत सारा लोन था. As we said in 2010, more than private, non-financial private debt in India was more than 100% of India's GDP, which has come down to around 80% now. But it was very high. Their balance sheet was stressed. Similarly, banks had a lot of NPAs. Their balance sheet was also stressed. So neither were they able to take loans, nor were they able to give loans. There were twin deficits. Fiscal deficit was also very high in 2014, and external deficit like balance of payment wale mein bhi there were lots of problems. Current account deficit generally India mein high रहता है. क्यों high रहेगा? Because we are a more import dependent country. Collapse of infrastructure finance and leasing, IL&FS का जो collapse हुआ 2018 में, it led to banks becoming more reluctant in lending. और इसीलिए lending growth had gone to single digit in 1920. But these problems have been worked upon. Recapitalization of bank has taken place. Private sector को promote करने के लिए corporate tax cut happened. In 2019, we have reduced corporate income tax to 25% when compared to earlier more than 30% के numbers. Okay, non-financial private sector debt to GDP ratio has come down to 83% from 113% in December 2010. ये सब दिखा रहा है कि now situation has been worked upon, problems, we are moving towards better situation. And in this paragraph, in this chart, they are comparing the two periods, 98 to 2002 and 2004 to 2014 to 2022. जो हमने पढ़ा है उसी को दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं कि शॉक्स टू द इकोनॉमी, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट इकोनॉमी वाज फेसिंग. जैसे 98 to 2002, हम व्हेन डिड वी डू द न्यूक्लियर टेस्ट? 97 में किया था. 98 किया था पक्का, सोच लो. हाँ राइट, यस 98. तो न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट अरे यहाँ लिखा है न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट in 98, sanctions, banking and corporate sector deleveraging and repairing balance sheet, 2 successive droughts, technology bust, US recession and 9/11 attacks ने problems create किया. ऐसे ही similar problems were there in India in between 2014 to 2022, period of banking, non-banking and non-financial corporate sector balance sheet stress. तो कॉर्पोरेट सेक्टर भी बैंकिंग सेक्टर में भी दोनों का बहुत सारा स्ट्रेस होना, ना वो लोन दे पा रहे ना वो लोन ले पा रहे, दैट सिचुएशन. अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक शॉक 2020 में, पैंडेमिक शॉक दैट अकर्ड, फॉलोड बाय इन्फ्लेशन, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस शॉक, फॉलोड बाय टाइटनिंग ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन. जो सारी प्रॉब्लम्स हमने अभी शुरू में डिस्कस करी, ऑल दोस प्रॉब्लम्स आर देयर. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, यहाँ पे इंटरेस्ट डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, एसेट रिकवरी फॉर बैंक्स, सरफेजी, we spoke about that. Infrastructure, golden quadrilateral वाला एग्जांपल, FRBM एक्ट. ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं. यूनिक आइडेंटिटी, आधार, फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, GST लीडिंग टू फॉर्मलाइजेशन, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, प्राइवेटाइजेशन, टैक्स रेट रैशनलाइजेशन which happened in 2019, decriminalization of offenses, vaccine rollout, expenditure management reforms, आत्मनिर्भर भारत, public digital infrastructure. तो growth returns, one-off shocks delayed the growth returns. Once shock faded away, structural reforms paid growth dividends from 2003 onwards. ये भी यही बोल रहे हैं कि these shocks have delayed our growth, but we will jump on like anything.
the growth magnet in this decade. What are the factors because of which we are saying that the coming decade is ours? Our growth would be very good. Strong balance sheet of both bank and corporate. ये पहले प्रॉब्लम था, अब नहीं है. Digitalization reforms and the resulting efficiency gains. इसमें more formalization, more financial inclusion. Digitization has led to a number of other advantages. A lot of services could be given more effectively at much cheaper prices. है ना? In fact, COVID-19 के बाद से तो infrastructure cost has also gone down. Just ऐसे imagine करिए कि before COVID-19 अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे रहे होते तभी और हमें यहाँ पे कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेना पड़ता. तो in terms of this you can understand कि efficiency has also gone up. Government procedures which used to take a lot of time has been reduced, which used to take a lot of resources. जब आप यूपीएससी के फॉर्म फिजिकली सबमिट करोगे तो वहां कोई उसे फिजिकली कलेक्ट करके एक एक चीज वेरीफाई भी करेगा. These are small examples. By this you can understand how digitization can solve a lot of problems. That has been done here. Evolving geopolitical situation also provides an opportunity. Why? देखो, evolving geopolitical situation has been a problem for us अभी के लिए, because what has happened, commodity prices has gone up, we are import dependent and all. But evolving geopolitical situation is also leading to increased tension between Western countries and China. So now those countries and those companies are looking for opportunities in other countries. India can be an alternative. अगर कंपनीज को चाइना से बाहर निकलना है, अगर एप्पल अपने ज्यादातर फोन चाइना में बना रहा है, बट टुमारो बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेंशन बिटवीन यूएस एंड चाइना, एप्पल वांट्स टू फाइंड more partners, more places to invest. Can this provide an opportunity for India? Yes. And it's not only Apple. Apple is just an example. बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो इन जगहों इन्वेस्टेड होंगी and they would need alternatives. And India could take advantage of that as well. But there are some areas where we further need to improve. Deregulation and simplification of compliances should continue to dismantle licensing, inspection and compliance regime entirely. Ease of doing business में अभी भी कुछ problems हैं. That has to be taken care of. State governments have to address power sector issues. Discoms have again become a stressed. उनको solve करना पड़ेगा. Electricity supply, efficient electricity supply is crucial for economic growth of any country. Then impetus must be given to education and skilling to match the requirement of future industries. असर रिपोर्ट से हमारा स्कूल एजुकेशन अच्छा नहीं है, बाकी इंडस्ट्रीज की जो रिपोर्ट्स आती है जिससे दैट आर ग्रेजुएट्स आर नॉट वर्थ एम्प्लॉइंग. वी नीड टू फोकस ऑन हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, स्किलिंग, सो दैट आर demographic dividend remains a dividend and does not becomes a bane for us. Then initiative to sensitize population towards healthy lifestyle. Obesity is one area where we are worsening. This would be another area that we'll need to focus upon in order to ensure that we contribute in India's economy to our full potential. Long range plans need to be formulated to secure the necessary metal and mineral required for energy transition and diversification. हमने rare earth metals की बात करी थी. We have studied that rare earth metals वाला टॉपिक कि कैसे इंडिया के पास डेफिशिएंसी होने की वजह से we are facing challenges. ऐसे ही लिथियम और फॉस्फोरस फर्टिलाइजर में जो होता है, इन सब की कमी is becoming a challenge for us. China is already occupying more and more of these resources in South America and Africa. We need to focus on that aspect also, कि how these critical raw material which we may be lacking could be accessed by us in future. Then determined effort should be taken to make public sector asset monetization schemes successful. National monetization pipeline has been announced, but we should ensure that वो successful हो. A lot of public asset which is lying untouched, used in a useless manner, can be monetized, and that money can be used for creating more capital in the country. More capital expenditure would lead to more economic growth. Then कुछ और चीजें हैं. Reforms to reduce compliance burden on MSMEs. अभी भी MSMEs पे बहुत सारे compliance burden है, छोटे business पे बहुत सारे compliance burdens हैं, and they face a lot of issue. Like we are also an MSME.
एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कंप्लायंस बर्डन इनडायरेक्ट टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में, कंपनीज एक्ट में, एमसीए में, एंड यू हैव टू हैव अ डेडिकेटेड सीए फॉर यू who will keep on doing this, and for small businesses sometimes it does not it is not feasible. Got it? So there are these steps that we would need to work upon, but because there are हम बोल रहे हैं कि there are already magnets which would contribute to high rate of economic growth in future. There are these small things, if we focus upon these two, हमारा growth rate और बढ़ सकता है. In fact, in conclusion, we are saying that India will achieve an average of 6.5% of real GDP growth in medium term. That is from 2023. यहाँ सिर्फ एक साल की बात नहीं कर रहे हैं, मीडियम टर्म की. 2023 to 2030 में हम एवरेज ग्रोथ रेट 6.5% रहेगा हमारा. बट if we focus on the problems that we have just discussed, our economic growth potential can go up to 7 to 8%. Right? This was the second chapter. इसमें बुक में कोई भी ऐसी चीज नहीं है. In the entire economic survey of India, there is not a single line which is relevant and which I have not included. So you do not need to go through the book, the economic survey of India का पूरा, because वहां पे आपको like शायद 50 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे इन दो चैप्टर्स को मिला के. मेंस के लिए, प्री के लिए जो भी रिलेवेंट है, वी हैव इंक्लूडेड. इफ आई एम नॉट इंक्लूडेड इट बिकॉज इट मे गेट इंक्लूडेड इन फ्यूचर चैप्टर्स. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ज्यादा डिटेल्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ज्यादा डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट के ज्यादा डिटेल्स, फिस्कल पॉलिसीज की ज्यादा डिटेल्स. व्हाई रिपीट एवरीथिंग इन एवरी चैप्टर? यू वुड सी दैट रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड इट्स इम्पैक्ट, दे विल कीप यूजिंग इट इन ऑल दी चैप्टर्स, है ना. विल नॉट अननेसेसरली रिपीट थिंग्स. तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ना समरी भी रिलीज हुआ है इसका, पीआईबी पे समरी रिलीज हुआ था चैप्टर वाइज. दैट्स नॉट गुड. यू गो एंड रीड दैट समरी नाउ. उसमें ना स्टोरी बताई नहीं है. इशू है ना, वो इशू नहीं डिस्कस किया है. उसमें इन्फ्लेशन इतना हो गया, ये इतना हो गया, इतना हो गया, ग्रोथ ऐसे हो जाएगी, नहीं. आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए. वो मैंने पढ़ा है. मैंने आपके लिए जो भी, इट्स नॉट एज स्मॉल अ समरी एज हैज बीन पब्लिश्ड बाय लेट्स से on PIB and everything, but it ensures that we have covered each and every relevant thing in economic survey of India. अब देखो, इससे ना ऐसे समझिए कि एक क्वेश्चन आता है कि what are the key factors which may be hampering India's economic growth? We have answer for that? Do we have answer for that? What are the key factors which are leading to high growth rate in India? We have answers for that? तो ये जो पहला वाला टॉपिक होता है ना सिलेबस का, उसमें देयर आर सब सेक्शंस, बट इकोनॉमिक ग्रोथ वाला एक जनरल टॉपिक जो है, उस कोई भी क्वेश्चन आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, यू विल बी एबल टू आंसर इट इन द मेंस एग्जाम. प्रीलिम्स में तो आप कल देखेंगे आपने कितने बेसिक समझे हैं, करे हैं. टुमारो आई विल ब्रिंग सम क्वेश्चंस ऑन दीज टू चैप्टर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेयर आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स और नॉट. कुछ प्रीलिम्स मास्टर्स प्रोग्राम वाले बच्चे भी हैं, उन लोगों ने गलती करी तो यही मुर्गा बनाने वाला हूं उनको. सच में तुम लोगों को बहुत डिटेल में बैठ बैठ के पढ़ाया है. दीक्षांत, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना. बाकी लोगों से गलती होगी तो बताएंगे, समझाएंगे. फाइन. तो लेट अस सॉल्व सम बेसिक क्वेश्चंस फॉर नाउ, है ना. इसमें कुछ क्वेश्चन पास्ट ईयर के, कुछ क्वेश्चंस मेरे खुद के बनाए हुए हैं. तो लेट अस सॉल्व दोस बेसिक क्वेश्चंस. जो पीएमपी वाले बच्चे हैं वो प्लीज सॉल्व मत करिए, आप लोगों को पहले ही कराया हुआ है. वी विल सॉल्व टोटल 500 क्वेश्चंस. एक बार जैसे हमारा इकोनॉमी खत्म हो जाएगा बाय February 20 और सो, वी शुड बी डन विद आवर इकोनॉमी. वी विल आल्सो सॉल्व 500 क्वेश्चंस ऑन इकोनॉमी. उसके बाद हम एनवायरनमेंट करेंगे. एनवायरनमेंट भी मार्च 15 तक खत्म करने का प्लान है. तो मार्च 15 से 20 के बीच में एनवायरनमेंट में भी वी विल सॉल्व 500 क्वेश्चंस. तो 500 क्वेश्चंस ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वुड स्टार्ट वेरी सून. इस वीक क्योंकि हमारा फोकस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बजट पे है, तो मे बी नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट, बट विल स्टार्ट. आप पढ़ते रहिए. आपका साइंस एंड टेक मोर और लेस पूरा हो गया है. एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी है, आप पढ़ते रहिए. उस पर 500 क्वेश्चंस मैंने बना लिए हैं ऑलमोस्ट. लास्ट ईयर के भी है मेरे पास, पर अब लास्ट ईयर के वीडियोस मत देखने लगेगा, इसका पहले से आंसर पता हो, फिर द पर्पस वुड बी डिफीटेड, है ना. इकोनॉमी के वी विल डू 500 क्वेश्चंस, एनवायरमेंट के वी विल डू 500 क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट लेट अस सॉल्व सम बेसिक क्वेश्चंस फॉर नाउ. If India is witnessing a growth in real GDP every year, which of the following must necessarily be true?
India is witnessing a positive GDP growth rate every year when calculated at constant price. Positive GDP growth rate every year when calculated at current price is increasing in India. It is decreasing in India. If India is witnessing a growth in real GDP every year, what is the answer? A. India is witnessing a positive GDP growth rate every year when calculated at constant price. Yes. So real GDP is at constant price. A basics का concept. A. Let's go to question number 2. If an economy is going through recession, it must mean प्लीज नोट यहां पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. एक करेक्ट है या दो करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, चारों करेक्ट है. नॉट विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ये पूछा हुआ है. ठीक है. इफ एन इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू रिसेशन, इट मस्ट मीन, डेफिनेटली वो होना चाहिए, है ना. इट मे नहीं है, इट मस्ट मीन. अगर रिसेशन में के थ्रू जा रहा है तो रियल ग्रोथ रेट नेगेटिव होना चाहिए, रियल जीडीपी डिक्लाइन होना चाहिए, दैट इज रिसेशन, राइट. इफ इट्स रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिक्रीजिंग, एम्प्लॉयमेंट रेट हैज बिकम स्टैग्नेंट. आई थिंक नन होना चाहिए आंसर. नन लग रहा है सबको पक्का. रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिक्रीज. 7% से 6% हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ. डज इट मीन रिसेशन? रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ, और नॉट जीडीपी, बट रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ. देखो दिस ईयर जीडीपी ग्रोथ इज 8%, नेक्स्ट ईयर इट बिकम 7%. हैज रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ रिड्यूस्ड? यस, 8% से 7%. बट डज इट मीन इट्स रिसेशन? नो. रिसेशन वुड मीन योर रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ इज नेगेटिव. सबको समझ में आया? नहीं भी समझ में आया तो घर जाके थोड़ा एफर्ट करना, बेसिक्स तो आपको खुद से पढ़ने हैं ना, राइट. किसी को कोई डाउट है? डाउट है बताइए. डाउट नहीं? पक्का? इज एवरीवन श्योर? तो हियर आंसर वुड बी ए. नन ऑफ देम आर करेक्ट. मस्ट बी ट्रू, नन ऑफ देम मस्ट बी ट्रू हियर. Consider the following statements about India's economic growth since LPG reforms of 1991. India's annual economic growth has always been positive except for the financial year 2020-21 due to COVID-19 lockdown. Economic growth हमारा हमेशा positive रहा था? Yes. Only in 2020-21 because of COVID वो -6% पे हम लोग grow हुए. Otherwise our economic growth was always positive. India's economic growth rate has always been increasing except इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो ऊपर नीचे हो रहा है ना, 4%, 5%, 6%. ग्रोथ रेट हैज केप्ट ऑन फ्लक्चुएटिंग. So 2 is wrong, right? What is the answer? A, one only. A, one only. Are we all comfortable with it? Okay. Let's come to question number 4. In the past decade, India's real annual GDP growth rate was highest in 2021-22. The most important factor behind it. पिछले 10 साल में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था दैट वाज हाईएस्ट इन 2021-22. व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड? बेस इफेक्ट. बिकॉज जीडीपी का जो लेवल था 2020-21 में दैट वाज सो लो दैट इवन फॉर स्मॉल राइज वी सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ रेट. ओके, बेस इफेक्ट. सी, फोर्थ का आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 5. एन इकोनॉमी इज सेड टू बी इन टेक्निकल रिसेशन व्हेन. टेक्निकल रिसेशन बता देते हैं जब आप व्हेनेवर योर एन इकोनॉमी is for 2 consecutive quarters is having a negative growth, then it is considered to be in technical recession. देखो recession is a very broad term, है ना. recession में ऐसा भी हो सकता है कि employment is going down, a lot of other factors may be there when a economy is in recession, है ना. But when we talk about technical recession on book, a country is said to be in technical recession if for 2 consecutive years its growth rate has been 2 consecutive quarters its growth rate has been negative.
If growth rate is, अब देखो, was for India was during COVID-19 was growth rate negative for 2 consecutive quarters? Yes. फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर दोनों में आई थिंक ग्रोथ रेट नेगेटिव रहा होगा, बट हम ऐसे नहीं बोल रहे थे कि हम बहुत बड़े रिसेशन से गुजर रहे हैं, राइट क्योंकि वो टेम्पररी इशू था। तो जब हम रिसेशन की बात करते हैं ना, वी से कि यार अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं हमें सामने, बट वी वेंट थ्रू व्हाट इज कॉल्ड टेक्निकल रिसेशन। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? आर वी गेटिंग दिस? So what is the answer here? An economy is said to be in technical recession. GDP growth has been negative for at least 2 quarters. ओके, थोड़ा सा डाउन डाउन से लग रहे हो। अपने आप लोगों ने पढ़ाई करी है नहीं करी है? कल फिस्कल पॉलिसी पढ़ के आना भाई, है ना। डू नॉट एक्सपेक्ट दैट मैं क्लास में फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, ये सब बता पाऊंगा, बिकॉज फिर वो इकोनॉमी की बेसिक्स वाली क्लास हो जाएंगी, है ना। इन 12 आवर्स आई वांट टू फिनिश इंटायर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, 12 चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसके लिए हमें ये सब चीजें पहले से आनी चाहिए, एंड बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स प्रोग्राम, आई एम होपिंग कि आप लोगों को बेसिक्स आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बी, the GDP growth has been negative for at least 2 quarters and there has been a decline in consumption and employment as well. ये जरूरी नहीं है ना कंजम्पशन और एम्प्लॉयमेंट में डिक्लाइन हो, है ना। वो जरूरी नहीं है कि टेक्निकल रिसेशन होने के लिए वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है ये? ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन FY24 रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज वेरी हाई इन इंडिया, वेरी लो इन USA, and the rupee US exchange rate does not change in FY24, then which of the following would be true for FY24? परचेसिंग पावर पैरिटी वाला कॉन्सेप्ट पता है सबको? पक्का? एल्स आई विल एक्सप्लेन, अगर किसी को नहीं पता आई विल एक्सप्लेन इट हियर। सबको पता है? गुड। तो हाँ बताइए फिर क्या होगा आंसर इसका? वीकनिंग ऑफ इंडियाज परचेसिंग पावर पैरिटी? यस, फाइन। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्पाइट अ हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है 2018 का। हाई सेविंग इकोनॉमी है, देखो जो सेविंग होती है उससे आप कैपिटल फॉर्मेशन करोगे, है ना, या फिर आप लोन लेके कैपिटल फॉर्मेशन करोगे। दीज आर द टू वेज बाय विच यू विल डू कैपिटल फॉर्मेशन, यू विल डू इन्वेस्टमेंट, है ना। तो डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। आप हाई सेविंग इकोनॉमी हो एंड दस यू आर क्रिएटिंग कैपिटल, but it is not leading to high increase in output. Why? High capital output ratio? High capital output ratio means कि आपको पर यूनिट आउटपुट के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ रहा है ना, इसीलिए आप बहुत ज्यादा कैपिटल लगा रहे हो तब भी आपका आउटपुट कम है, राइट। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसको ना गिव मी 2 आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। 1 if it was asked in 2015 and 2 if it was asked in 2023, है ना। गिव मी 2 आंसर्स। 2015 में तो पूछा ही गया था, उसका आंसर देना है, एंड 2023 में अगर ये पूछा जाएगा उसका आंसर देना है। विल दे बी सेम, विल दे बी डिफरेंट? The rate of growth of real gross domestic product has steadily increased in last decade. रेट ऑफ ग्रोथ तो स्टेडली नहीं हुआ ना, 2015 में स्टेडली हुआ ना अभी, है ना। रेट ऑफ ग्रोथ हैज 4%, 5%, 7%, इट हैज केप्ट ऑन गोइंग अप एंड डाउन, राइट। आर वी ऑल कंफर्टेबल अबाउट इट? आर वी ऑल श्योर अबाउट इट? वन इज रॉन्ग, वन इज रॉन्ग इन बोथ द केसेस, ओके, वन इज रॉन्ग इन बोथ द केसेस। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस has steadily increased in last decade. 2015 में देखो जीडीपी एट मार्केट, जीडीपी ग्रोथ तो हमेशा पॉजिटिव था, इन्फ्लेशन भी हमेशा पॉजिटिव ही रहा था, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस केप्ट ऑन इंक्रीजिंग 2005 से 15 तक। बट कम टू 13 to 23, if it's asked in 2023 then the question would be from 13 to 23. Will second statement be true? At market price the gross domestic product at market price has steadily increased in the last decade. देखो हमारा जीडीपी तो नेगेटिव था,
in 2020-21. तो जीडीपी एट रियल प्राइस वाज नेगेटिव. जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखना पड़ेगा, है ना. वाज जीडीपी एट मार्केट प्राइस आल्सो नेगेटिव? क्या इन्फ्लेशन, was there an increase in nominal GDP in 2020-21? Real GDP तो went down for sure, but because of, so real production went down. Production went down, but what if the prices of products went up? इससे nominal GDP could have gone up, right? Are you understanding the issue? उर्वशी को समझ में नहीं आ रहा है पक्का? थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो नहीं आ रहा ना, मतलब इकोनॉमी में थोड़ा थोड़ा नहीं आता समझ में. देखो, what I'm saying is, let's say we were producing only 10 kg of wheat in 2019-20. Okay, we are saying there has been a reduction, so we are producing only 9 kg in 2020-21, है ना. So when we will consider real GDP, तो real GDP तो definitely down गया, because real GDP would be at constant price. Constant price of wheat मान लो 8 rupees per kg. तो यहाँ पे आर जीडीपी वॉज 80 रुपीज, यहाँ पे आर जीडीपी इज 72 रुपीज, राइट. बट नॉमिनल जीडीपी वुड बी एट मार्केट प्राइस, नॉट एट कांस्टेंट प्राइस. व्हाट इफ द प्राइस ऑफ व्हीट हेयर वाज 10 रुपीज एंड प्राइस ऑफ व्हीट हेयर बिकम्स 12 रुपीज? 10 into 8 और 10 into 10 100. नॉमिनल जीडीपी कितना है इसका? 100. और इसका नॉमिनल जीडीपी कितना होगा? 12 into 9. So while real GDP has declined, nominal GDP may actually go up because of inflation. हाँ, तो मैं ये नहीं बोल रहा है था कि नहीं, मैं समझा रहा हूं कि इट मे बी डिफरेंट. हमें समझना, हमें ये देखना होगा what was the inflationary situation in 2020-21. इन्फ्लेशन था because of supply chain disruption. प्राइसेस हर चीज के, दूध के, चिकन के, हर चीज के प्राइसेस बढ़े हुए थे. नहीं तो वो हमें एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन था तो कितना था, है ना. तो उससे नॉमिनल जीडीपी भी कम हुआ है कि नहीं. दिस विल हैव टू अंडरस्टैंड इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन इन 2023. बट आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको. डिड वी ऑल अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट? while real GDP may go down, nominal GDP may be higher. So we for sure know that in 2020-21 real GDP went down. GDP growth rate went down. But if nominal GDP also went down, उसके लिए we have to understand the rate of inflation, right? Let's come to, इसको हम inflation का डेटा देख के बात करेंगे कि what was the inflationary situation. Economic growth is usually coupled with, economic growth के साथ क्या आएगा? Inflation. Economic growth is generally coupled with inflation. Okay, ये सबको पता है economic growth और inflation, है ना? Did I skip 9 question? Okay. Economic growth in country X will necessarily have to occur if, हमने अभी सब देखो, कैपिटल जैसे इन्वेस्ट कर रहे हो आप, वो नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा और आउटपुट में एडिशन करेगा. इफ देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन, फाइन. अब जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट्स, प्लीज एक बार बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी अच्छे से कर लीजिए. करंट अफेयर्स क्लास में इतना बैंडविड्थ नहीं रहेगा कि मैं इकोनॉमी बेसिक्स में बहुत डिटेल में जा पाऊंगा. आई विल ट्राई टू कवर एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल, पर इतना डेप्थ पे नहीं जा पाएंगे, ऐसा हो सकता है. ओके, तो लेट्स मीट टुमारो 5 PM, चैप्टर 3 and 4 of Economic Survey of India. Fine, and be prepared with these 2 chapters. I'll make some questions on these 2 chapters. Economic Survey of India से क्वेश्चंस बनाएंगे. ठीक है, कल मिलते हैं. थैंक यू. ऑनलाइन वाले बच्चों के डाउट्स, एक मिनट रुक जाओ. देयर आर सम ऑनलाइन डाउट्स, लेट मी सॉल्व देम. मैं आप लोगों से बाहर मिलता हूं, मेरे को ऑनलाइन डाउट्स देखने दीजिए. Sir, when looking at economic survey, okay,
आई डोंट थिंक कोई डाउट है सर. व्हाट इज शेड्यूल? हाँ, अरे दिस वीक यू डोंट हैव अ टेस्ट. जो वीकली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है ना, दिस वीक यू डोंट हैव अ टेस्ट. दैट इज ऑन संडे. यू डोंट हैव अ टेस्ट क्योंकि उसमें इकोनॉमी का सिलेबस डाला हुआ है. अभी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया हुआ नहीं है, तो एक बार वो हो जाता है देन विल हैव दैट टेस्ट.